it amounts to against Parliament who makes laws. Chale, anyways. So that's the only reference. Ji. Allocation of symbol I must keep reminding you. Ji. Kitna waqt aur? Sir, if I say 10 minutes, is that fine? 10 honge. 10 hoga, sir. 10 of my topic. Allocation of symbol to political parties governed under Chapter 12 of the Election Act 2017. A political party who has complied with the provisions of Section 202, 206, 209. ये हम पढ़ चुके हैं. इसमें अगर आपको खास पॉइंट बताएं ना, वो हम अंडरलाइन कर लें. जी. Line 5 हमने पढ़ लिया. जी. Line 5. The penal clause I subsection 5 of Section 215. Envisaging for ineligibility to obtain an election symbol can be invoked only when a political party, despite a show cause notice, has failed to comply with the provisions of Section 209 or 210 of the Election Act. Section 209 only deals with the submission of documents and in no manner authorizes the ECP to question or adjudicate upon the validity of intra-party election. Indeed, it is settled law that a regulatory and penal provision in any law should be construed strictly. Penal statutes tending to deprive valuable rights of franchise should be strictly construed, and in case of doubt, benefit must go to the person against whom it is sought to be invoked. Disqualifying provisions in an act dealing with municipal election are penal provisions and therefore ought not to be extended beyond their legitimate limit. But at the same time, if there is any doubt, the court should be careful to see that the intention of the legislature in enacting the section is duly observed. AIR, Calcutta, Understanding Statutes by Essence of a page so and so. The combined reading of Section 208, 209 and 215 does not give any impression that the ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of a political party. The perusal of the entire Election Act would certainly show that the ECP has no jurisdiction to conduct a roving inquiry into any matter, rather its jurisdiction is summary in nature. फिर वो आ गया केस की quotation बहादुर वाली, and then para 21. The outcome of the aforesaid discussion is that the impugned action of ECP denying election symbol to the petitioner has the effect of depriving the petitioners and its members to freely participate in the affairs and governance of Pakistan through political activities as guaranteed through Article 17(2) of the Constitution. Indeed, the Constitution 73 has ensured that every citizen in Pakistan has the right to form or be a member of a political party subject to any reasonable restriction. इससे तो कोई दो राय नहीं है. फिर वो quotations आ गई. We've already read the judgments, referred to them at least. And then the conclusion at page 23, I would like to read. Ji. Last 5 lines. The government of the political party so formed must implement the program of the political party which the electorate has mandated it to carry into effect. And now this. Will you agree with this? Ji. Hey, suppose you give a certain thing. Manifesto. So the government of the political party so far must implement the program of the political party. कोई manifesto की बात नहीं, तो फिर ये क्या declaratory decree वो judgment दे रहे हैं कि आपने whatever कह दिया अपने manifesto में आप उसको implement करेंगे. कैसे होना? ये तो मेरे ख्याल में मुनासिब बात नहीं है. होना चाहिए सर, because manifestos हमारी political party होना चाहिए. It's like a wish. God cannot direct. Suppose कल आप कहेंगे जी 16 साल के बच्चों को या उनको वोट का हक देना चाहिए. For instance, आपके मैनिफेस्टो में लिख दें, God can't direct you. Yes. Parliament can change laws if they want to. Correct. बिल्कुल सही. Any unlawful order which results in frustrating this activity by removing it from the office before completion of its normal tenure would therefore constitute an infringement of this fundamental right. उसके बाद से नेक्स्ट पेज पे उन्होंने वो केसेस हम कोट कर चुके हैं ऑलरेडी, रिलेशनशिप बिटवीन सिंबल एंड अ पॉलिटिकल पार्टी, एंड देन द सिंपल कंक्लूजन दैट द जुरिसडिक्शन इज नॉट देयर. सो आई वुड सपोर्ट दिस जजमेंट. एंड आखिरी बात जो मैं करूंगा सर, बिकॉज आई हैव टू कंक्लूड इन 10 ओनली थिंग इट मे एक्सेप्ट इफ आई कैन स्पीक ऑन योर बिहाफ, एक्सेप्ट कॉलिंग अ प्रोविजन ऑफ लॉ absurd. Ji. As a parliamentarian, you would not want that to be. That can be changed. बिल्कुल ठीक है. चलें जी. अच्छा सर, before I end, एक दो just the concept कि एक जिसने कंडक्ट किया इलेक्शन उसने दुरुस्त कंडक्ट नहीं किया और उसकी वजह से सिंबल ले लिया गया. Just the concept
एक केस था काफ़ी पुराना, PLD 68 सुप्रीम कोर्ट। उसमें हुआ ये था कि बार काउंसिल्स के इलेक्शन कराने होते हैं एडवोकेट जनरल ने, वो चले गए रन ऑफ कच्छ करने, आर्बिट्रेशन रन ऑफ कच्छ की। सो ही वाज गोइंग टू बी अवे। तो कोई असिस्टेंट एडवोकेट जनरल या एडिशनल थे, उन्होंने इलेक्शंस करा दिए ऑफ द बार काउंसिल। तो बहस हो गई कि कुछ झगड़ा हो गया बिटवीन द डिफरेंट कैंडिडेट्स ऑन द इलेक्शन। सो वन ऑफ द ग्राउंड्स टेकन वाज कि ये इलेक्शन जो जिसने कराया इज नॉट द एडवोकेट जनरल, ही इज समबडी एल्स। तो कोर्ट ने कहा कि शो अस द प्रेजुडिस दैट वाज कॉज्ड बिकॉज ऑफ हिम नॉट बीइंग अ एडवोकेट जनरल। तो अगर वो प्रेजुडिस नहीं है तो देयर इज नो कनेक्शन और नेक्सस बिटवीन अस डिक्लेयरिंग दैट इलेक्शन एज वॉइड और अदरवाइज। Wouldn't those who wanted to contest, who've not been able to contest, aren't they prejudiced? किसी ने ये रेज नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये इलेक्शन कमीशन की अपॉइंटमेंट गलत होने की वजह से वी आर प्रेजुडिस्ड। Nobody raised that. नहीं, वो उनका तो और भी बुनियादी, वो तो कहते हैं हमें नॉमिनेशन पेपर, हमें आपने नॉमिनेशन पेपर तक नहीं दिया तो हम इलेक्शन लड़ें कैसे? जी, वो ये कहते हैं। उनका तो और भी बुनियादी। लेकिन मेरा भी, मैं जो पॉइंट बना रहा था वो ये था कि nobody said कि जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो गलत थी और जो कंडक्ट किया वो गलत था। None of the people have said that. They've only said what your lordship is saying. शायद उनको पता भी ना हो ना कि आपने अंदर करा क्या। Correct. क्योंकि जब वो तो सिर्फ कंप्लेन कर रहे हैं कि जी मुझे इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दे रहा, अब उनको ये नहीं पता कि ये कागज तो बाद में आए ना, कि ये कागज है वो कागज, उनको तो ये नहीं पता होंगी चीजें, शायद वो ऑब्जेक्शंस ले लेते। That point is conceded. But nonetheless the point being कि कोई prejudice on the face of it नहीं हुआ। और ये judgments हैं, कुछ judgments मैं quote करना चाहूँगा your lordship में से points different thing, किस point पे? इसी point पे कि there's a concept of de facto, something happening de facto, कि appointments गलत भी हों तो जो orders पास हो गए हों या actions हो गए हों वो nullify नहीं होते। ये तो आपका कोई सरकारी ओहदा तो नहीं है ना? जी हाँ, तो वो प्रिंसिपल यहाँ कैसे वो इस तरह अप्लाई करूँगी, इवन सरकारी ओहदे में, इवन सरकारी सिचुएशन में, इवन जहाँ जजेस अपॉइंट गलत हो जाएं और उनके जजमेंट्स को क्वेश्चन किया जाए तो ये कहा जाता है मलिक असद केस में तो प्रोटेक्टेड है। जी जी, अली वो वाला, दो ज़्यादा जजेस के वो जी जी, वो फरजंद केस, फरजंद अली केस, असद अली केस, सिंध हाई कोर्ट बार एसोसिएशन केस, अब वो तो सेटल प्रिंसिपल है। तो वो अगर प्रिंसिपल आप देखें कि अगर आप पे कैसे लागू होगा ये प्रिंसिपल, वो इस तरह होगा कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर को ये कह सकते हैं कि वो उसकी अपॉइंटमेंट गलत है तो उसके ऑफिशियल ऑर्डर्स और उसकी जो डिसीजंस हैं ठीक हैं, तो फिर एक प्राइवेट पार्टी में अगर एक बंदे को आप कह भी दें कि उसने गलत अपॉइंटमेंट हुआ है इलेक्शन कंडक्ट करने के लिए, तो इलेक्शन को किस तरह अवॉइड कह सकते हैं? टू दैट एक्सटेंट इज माय आर्गुमेंट ऑन दिस। नहीं तो आप दोबारा कर ले इलेक्शन, मसला क्या है? सर सिंबल निकल गया ना, आई हैव नो इशू। अच्छा ओके, ऐसी आई हैव नो इशू। ठीक, चलें। अगर मुझे मिलता टाइम तो आई वुड डन इट, लेकिन वो सिंबल मींस आई एम चिल, बेसिकली चिलिंग। खत्म आई एम खत्म जी। आई होप यू आर नॉट खत्म। अच्छा, वो आए इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, बुलाएं उनको। तो गौर साहब किधर हैं? A very serious complaint has been made before us. This is completely intolerable. Please attend to this complaint immediately. If heads need to roll, do so, whatever it is, whatever. Mr. Gaur Ali, घर पे कौन था आपका? मेरी मिसेस थी, मेरा बेटा था, और वो आप फौरन उनके घर पे जाइए खुद, लॉर्डशिप। ठीक है? और क्या हुआ, अब यहाँ हम ये जरा फोकस नहीं हटाना चाहते हैं इस केस से। एंड इफ यू स्टिल हैव एनी कंप्लेंट, you submit it to us in writing. Sure, Your Honor. ठीक है? तो this is very serious. Do you know what has happened or you don't know what has happened? Lordship, it's जो early. Do you know what has happened or not? Lordship, we have. It's a raid on. Too early to comment on that. We understand certain things have happened, and the police has gone to that place. And लेकिन जो details जो इनका जो मौक़िफ़ है, जैसे आपने नहीं, आप क्यों गए थे इनके घर पे, ये बताइए। लॉर्डशिप, जो अभी तक इतला आई है उसके मुताबिक जो पुलिस की एक पार्टी ने वहाँ पे रेड किया
किया है क्यों? और they had the information of proclaimed offenders. कौन है proclaimed offender? ये डिटेल्स लॉर्डशिप इतने कम टाइम में एग्जैक्टली नाम मेरे इलम में नहीं है, लेकिन जब गए हैं पता चला है कि ये बैरिस्टर साहब का घर है, so they were returned. नो मगर वो कौन है proclaimed offender? वो लॉर्डशिप उस थाने में लिखा भी होगा जो ASI या जिस लेवल का ऑफिसर गया है, he must have that. कौन सा थाना है? कोसार आप जाती तौर पे मालूमात कीजिए और फिर हमें राइटिंग में रिपोर्ट दीजिए, और एसोसिएट गौर साहब और his wife or whoever is at the home, आप तो यहाँ थे, आपको तो नहीं पता वहाँ क्या हुआ, ठीक है? This is a very serious matter. देखें, every citizen has to have full protection, ठीक है? Since you are not aware of it, but heads may roll, so आप जरा सा take personal attention of it. रेड हुई है नहीं हुई है? गौर साहब, would you like to go with him now or you want? हाँ, रेड हुई है जी यूर ऑनर। आप ऐसा करें कि आप इनको ले जाइए गौर साहब को अपने साथ, ठीक है लॉर्ड। इन द सेंस कि उनसे पूछ, इनको तो नहीं पता, आप इन्हीं के घर जाइए, जी सर। आप खुद जाइए, गौर साहब को भी ले जाइए और मालूमात कीजिए, and if Gaur Sahib is not satisfied, then Hamid Khan Sahib, you can convey the thing or he can directly, so it would be better if आप कर लें, ठीक है? तो ठीक, लॉर्डशिप। anything else Gaur Sahib? that should be enough for now, Your Honor. तो आप ठीक है, please go along with the Inspector General. Sure, Your Honor. आप जाइए immediately, no other thing, this is the first priority order of business. लॉर्डशिप। Thank you very much for coming into this. No, actually I didn't want your arguments to, because I wanted to first send for, I mean, I don't know what's happening, so I just wanted to tell the AG to send for the Inspector General of Police. Appreciate it, sir. So, I mean, no point telling the AG, he won't know anything. जी. Thank you, sir. I have concluded, ma'am. नहीं, अच्छा, Mr. Makhdoom Ali Khan, where is he? अच्छा, जो बाकी 13 लोग हैं, उनके लिए कोई वकील हैं या वो? हाँ? You only represent one. नंबर के लिए बुला लेना। अच्छा, 5 लोग in person हैं। अच्छा, sorry, आप, अच्छा, you wanted to add something, जी? Short submissions, but one thing for which I am extremely grateful that Your Lordship has taken cognizance of taken notice of what has happened during the course of the thing. This incident actually provides answers to 2 questions that have arisen here during the course of hearing. One was, हाँ साहब, थोड़ा सा इंतजार करें, let's see what happens. नहीं, वो अगर गौर साहब is not satisfied, we will take further action. Don't इस worry. केस को कुछ We have not taken any, मतलब, let's चलिए अब केस पे बात जनरल करें। परसेप्शन की बात कर रहा हूँ। केस पे बात करें। परसेप्शन ये है कि यहाँ पर किसी को कोई काम नहीं करने दिया था। The 2 places इस्लामाबाद। हाँ साहब, हम भी पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं सर, बात तो मेरी कबूल कर लेने, उसका आप नोटिस ले रहे, मेरा फर्ज है मैं आप जनाब तक पहुँचाऊँ। Why we held the elections in Peshawar? Because the administration in Islamabad and Punjab harass our workers. And they cannot assemble. खान साहब, आपकी बात अगर ये हम मान लेते हैं, तो अगर आपकी बात ये बात है, तो फिर आप सरकार को खत क्यों लिख रहे हैं कि जी मैं इलेक्शन करा रहा हूँ पेशावर में, मुझे सिक्योरिटी दो? फिर तो आप चुपके से कराएं, इनको बताएं नहीं। तो एक तरफ तो आप बता भी रहे हैं ना, तो वो जरा कॉन्ट्रडिक्शन आ जाता है उस बात में। इसलिए कि अल्टीमेट हम आपकी बात समझ गए, मगर फिर हमारा सवाल फिर आप जवाब दीजिए ना। अगर आपने कहा कि जी वो तो हमें इलेक्शन मीटिंग ही नहीं करने देते, हम चुपके से जाके अपनी मीटिंग कर ली, मगर फिर आप खत तो नहीं लिखते उनको क्या मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करो? तो उन्होंने जवाब में लिख दिया, भाई कहाँ कर रहे हो, हम आपको वहाँ सिक्योरिटी देते हैं। कोई यहाँ पर सिक्योरिटी प्रोवाइड करते नहीं हैं। नहीं, मैंने कहा जब आपने जब बात की उसका मैं फिर सवाल बनता है उससे। जी चलिए, we still have a duty to चलिए, let's proceed with the notice to them. Secondly, we can't provide every remedy in the world, but we can attend to the case. जी, why did we choose the Peshawar High Court? दूसरा ये सवाल था, मैं अपने तौर पे जवाब जी जी। Because of our experience, so many hundreds of our workers, thousands of our workers, ladies have been picked up during the day. खान साहब, केस के लिए आपकी कोई वर्कर की तो जरूरत नहीं है, केस के लिए तो एक वकील की जरूरत है ना। अली जफर साहब तो
खड़े भी हुए कल कोर्ट में और उन्होंने बात भी की, तो हंड्रेड्स ऑफ वर्कर्स पिकअप हो रहे हैं या ना हो रहे हैं, मगर केस तो एकदम फाइल हो गया तो किसी को आने की तो जरूरत नहीं है कोर्ट में। सिर्फ वकील, या तो आप कहें जी वकील को नहीं जाने दिया, वो एक अलग बात है, किसी को आने की जरूरत नहीं है। जैसे आप आज खड़े हमारे सामने जी, आप 1000 वर्कर्स ले आए, वो आपकी मर्जी, मगर उनको आने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको आने की जरूरत है। मैं परसेप्शन एक्सप्लेन कर रहा हूँ व्हाई वी प्रेफर्ड, बिकॉज द मोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ द हाई कोर्ट्स वी फील इज स्टिल द पेशावर हाई कोर्ट, बिकॉज देयर ऑर्डर्स आर बीइंग कैरिड आउट. The orders of Islamabad High Court and Lahore High Court have not been carried out. इधर से बेल मिलती है, वो बाहर निकलते हैं, साथ ही उनका डिटेंशन ऑर्डर में फिर अंदर कर दिया जाता. पेशावर हाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में मगर ये देखिए, बुनियादी आईनी सवाल का आप जवाब नहीं दे रहे हैं. एक लिस्ट आपने 5 मेंबर बेंच की बेंच बन गई. 5 मेंबर इज अ वेरी बिग बेंच फॉर अ हाई कोर्ट. लाहौर विच यूजुअली इट्स 1 मेंबर सिंगल मेंबर बेंच. तो वही केस आप वापस ले लेते, फिर दूसरी बात है, वो केस पेंडिंग उधर है, फिर आप लाहौर चले गए, पेशावर चले गए. इस बात समझ नहीं आ रही है ये बात. सर वो तो किसी एक इंडिविजुअल ने किया है, पार्टी ने नहीं, वो वाला केस भी छोड़ दीजिए, वो भी मान लेते हैं, मगर वो जो WP जो वो क्या नंबर है उसका 81171 इसके लिए बनी थी ना, या 2023 इसके लिए बनी थी 5 मेंबर बेंच. वो वाला दूसरा फैसला आप जवाद हसन साहब की बात कर रहे हैं, वो सिंगल मेंबर था और इंटर कोर्ट अपील में वो अपील हो गया है. हम उसको भी छोड़ देते हैं. हम इस वाले केस की बात कर रहे हैं, 5 मेंबर बेंच जजमेंट, जिसमें इलेक्शन ही का इशू था, लेकिन उसको प्रेस नहीं किया गया है. नहीं, अब आज भी जिंदा है, केस पेंडिंग पड़ा है. कल उसमें अली जफर साहब ने खुद कहा कि मैं अपीयर हुआ था, मगर बेंच he did not say that I moved an application withdrawing the petition or anything. But anyways, even if he does so now, the relevant date will be at the date of filing of the petition in the Peshawar High Court. Otherwise, देखिए, हमें भी पता था, हम भी वकालत करते थे, कभी सोचते थे कि कभी इधर ज्यादा केस चल जाएगा या whatever, या जजेस का अप्रोच होता था. ये हम सब गुजरे इस स्टेज से, तो हम कोशिश करते थे कि भाई जुरिस्डिक्शन खींच के ले भी जाते थे कहीं और भी. देखिए, we have all played this game. पर एक दफा इंतखाब कर लिया आपने जुरिस्डिक्शन का, कभी कभी हमने इस्लामाबाद में कर दिया, इंपोर्ट हो रही है कराची से, नहीं बिकॉज FBR इज बेस्ड इन इस्लामाबाद, हमने वो यूं बना ली जुरिस्डिक्शन. तो अगर आपने जब इंतखाब कर लिया फिर जाना मुझे नहीं समझ आता है, ये बात है. एक्सपीरियंसेस हैं हमारे, मैं इसको ज्यादा डिटेल में टाइम नहीं लेना चाहता. I just wanted to inform you. Now, sir, I'm coming to the few propositions, in addition to what has been very ably, comprehensively argued by Mr. Ali Zafar. I'm just adding a few propositions to that. And most courteously, if we may add. Your Lordship knows me better than that. And you are also very kind, always. I try my best not to be ever discourteous, sir. First and foremost submission is that Election Commission of Pakistan, ECP being a constitutional and statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions. That ECP being a constitutional/statutory body performing regulatory and quasi-judicial functions cannot legally be an aggrieved person. And therefore has no locus standi to file the present petition before this honorable court. Therefore, the petition of ECP is not maintainable and liable to be dismissed on this preliminary ground. I'm relying on 2 recent judgments of the Supreme Court. एक चीज बताएं, when you use the word aggrieved person, does Article 185 require that? If a judgment is wrong, I may not be aggrieved by it. Can I not still challenge it under? They've come under 185. They have not come under Article 199, which of course starts with the word any aggrieved person except habeas corpus
So let's see 185 में does the word aggrieved mention or no? It's not mentioned, no doubt about it. But generally, suppose someone challenges a judgment of the High Court, yes, and he may not be aggrieved, but he may say this judgment is wrong. may not So be. if he was a party in the lower court, will we say, oh, you're not aggrieved by it, but would it really matter? We agree with you, but it's not a requirement of the Constitution that they have to be aggrieved, or is it? It may not be in Article 185, but may I submit that generally the principle that is applied for any kind of writ jurisdiction and its appellate jurisdiction is under Article 199. So though the appeals or the petitions are filed under Article 185 clause 3, but that does not mean that the principle applicable to Article 199, because it is initiated through Article 199. But there they were the respondent, not the petitioner. Yes. So the requirement of aggrieved would be on the petitioner, not on the respondent. No doubt. But sir, the result is that it is continuation of that. Why was the petitioner here? They are the petitioners. But the question ये is, बताइए, suppose ऐसे मफरूजे के तौर पे जी जी, कोई और केस में हाई कोर्ट कह देता है आई हियर बाय अबॉलिश द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, जजमेंट आ गया, if another party aggrieved can come home. ईसीबी कांट कम, अजीब सी बात नहीं होगी? या वो किसी मेंबर को रिमूव कर दें कि आई डोंट लाइक दिस मेंबर्स फेस, आई रिमूव हिम. आई मीन आई एम गिविंग यू absurd example so the point can be appreciated. So ईसीपी कांट कम जी मेरे मेंबर को हटा दिया, अनलेस इट्स अ को-ब्रोंटो रेट, तो अलग बात है, ठीक है, हम ये सारे मेंबर्स बदल दो, नए वाले अपॉइंट कर दो. जावेद हाशमी केस में भी ईसीपी था पिटिशनर इस कोर्ट में. जावेद हाशमी का जो केस है ना कल साइट हुआ है, तो ये जरा मुझे ज्यादा इसमें, But I'm relying on judgments subsequent to the Javed Hashmi's case. Let me show these judgments. जावेद हाशमी का केस तो 5 These are मेंबर very recent judgments. One is 2023 judgment. जो आपने हमें 2 दे चुके हैं वो रिपीट ना कीजिए, वो मैंने अभी भी नोट आपको बता देता हूँ जी, वो आप एक ऑम्बड्समैन का था और एक वो था कमीशन का, वो जी सर, हाँ वो वाले हमने नोट कर लिए, उसके अलावा कोई बताना चाहें? वो तो आपने पहले ही दिन बता दिया था. एक जजमेंट, इसके अलावा दूसरी PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट 5-1. There is also now one more judgment. PLD 2020 सुप्रीम कोर्ट, That PLD 2020 Supreme Court 586. ये वही वाला है, कल वाला है. वही 2 जज. हाँ वो तो मैंने नोट किए हुए हैं. एक केस में जो था वो कंपटीशन कमीशन था, स्टैट्यूटरी बॉडी, दूसरे केस में ओम्बड्समैन था. इलेक्शन पिटिशन कमीशन का कोई डायरेक्ट केस है आपके पास जिसमें इलेक्शन कमीशन का पार्टी और उसमें ये होल्ड हुआ हो? कि आपकी तरफ से आगे आप तो अगली पार्टी हो ही नहीं सकते. ड्रॉ पैरेलल, वो मैं आपको अर्ज किए जाता हूँ कि इसमें क्या वजूहात है, व्हाट इज अ पैरेलल बिटवीन द टू. एक थर्ड जजमेंट है जो अभी रिपोर्ट नहीं हुई है. दे दीजिए, कॉपी दे दीजिए. उसकी कॉपी से आपको दे दी. दे दे. A recent judgment authored by your lordship, civil petition number 3532 of 2023. जावेद हाशमी 4 मेंबर है. आप दे रहे हैं कॉपी? जी इसके कॉपी नए वाले जो कह रहे हैं वो कंप्लीट है. इसके 2 दे रहे थे ना ये बार-बार. अच्छा, ये राइट टू इंफॉर्मेशन वाली जजमेंट इसी पॉइंट पे नहीं, ये जजमेंट है जहां रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन फाइल की थी और जनाब ने होल्ड किया है कि इट कैन नॉट. राइट टू इंफॉर्मेशन वाली, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन, ये right of information वाला है. मुख्तार अहमद अली वाला केस. हाँ तो हमने दे दी अब इंफॉर्मेशन. नहीं तो इससे आपके केस से क्या ताल्लुक बनता है? नहीं सर, इसमें सिर्फ ये है कि सुप्रीम कोर्ट एज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कैन नॉट बी ए पिटिशनर. दिस इज व्हाट हैज बीन, एज आई सी, हेल्ड इन दिस जजमेंट इन पैरा 9 ऑफ द जजमेंट. May I read out this para 9? अगर आप हमें दे देते तो आसान होता. Another 5 minutes I will provide. आप पढ़ने जी सर, पढ़ देता हूँ. पढ़ लीजिए. The question of maintainability of the writ petition filed by the registrar of the Supreme Court before the High Court.
आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरोज को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। आपको अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरोज को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दे। अहम खबर से आगाह करें कि इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का कहना है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों के जरिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। आरोज को हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दे। आरोज को हिदायत की गई है और वो कहा गया है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इन दरख्वास्तों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। और आरोज को भी हिदायत की जाती है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया कि अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं और इन दरख्वास्तों के ज़रिए इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है। इसी पर मज़ीद बात करते हैं आतिफ भट्ट से। जी आतिफ, बताएगा इस हवाले से। जी, इलेक्शन कमीशन का एक अहम फैसला जो है वो सामने आया है और जिसमें ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को वो मुतअद्दिद दरख्वास्त जो हैं वो मौसूल हुई हैं कि जो इलेक्शन कमीशन के बाद उम्मीदवार जो हैं वो कानून की खिलाफवर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को धोखा दे रही हैं। और इस हवाले से जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं उसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन ने अहम फैसला किया है। इलेक्शन कमीशन ने किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवारों को अलाट करने से रोक दिया है और ऐसी तमाम दरख्वास्तें जो हैं वो मुस्तरद कर दी जाएं। ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से रिटर्निंग अफसरान को हुक्म दिया गया है और कहा गया है कि इस हवाले से सख्ती से कानून और आला अदलिया की जो हदायत हैं उस पर अमल दरामद किया जाए। और यह जो फैसला है इसमें इलेक्शन एक्ट 2017 के सेक्शन 66 का भी हवाला दिया गया है कि उम्मीदवार जो है वो सेक्शन 66 के खिलाफ वर्जी के मुर्तकब हो रहे हैं और एक्ट के मुताबिक हर उम्मीदवार को जो है वो पार्टी से वापसी का सर्टिफिकेट जमा कराना होता है और ये सर्टिफिकेट जो है वो बयान हल्फी से पहले जमा कराना होता है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से तमाम रिटर्निंग अफसरान को किसी दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात को देने से मुकम्मल तौर पर रोक दिया गया है। अच्छा आतिफ, ये भी बताएगा, आरोज को तो हिदायत की गई है कि वो किसी ऐसे उम्मीदवार को दूसरा इंतखाबी निशान ना दें, तो ये भी कहेगा अक्सर उम्मीदवारों की दरख्वास्तें भी मौसूल हुई हैं, वो उम्मीदवार कौन है, इस हवाले से क्या कार्रवाई की जा रही? जी, इस हवाले से जो रिटर्निंग अफसरान को मुख्तलिफ जो उम्मीदवारों की जानिब से जो है वो इंतखाबी निशान दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान मांगा गया है और उसके हवाले से सर्टिफिकेट जमा करवाया गया है। उस पर इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि किसी भी दूसरी सियासी जमात के उम्मीदवार को दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो किसी सूरत अलाट नहीं किया जाएगा, क्योंकि जो रिटर्निंग अफसरान को कागजात नामजदगी जमा करवाए गए हैं मुख्तलिफ उम्मीदवारों की जानिब से उसमें ये मेंशन किया गया है बाज़ उम्मीदवारों की जानिब से कि वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के तौर पर जो है वो कागजात नामजदगी जमा करवा रहे हैं और ये कागजात नामजदगी में मेंशन है। तो इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने रोका है रिटर्निंग अफसरान को वो किसी भी उम्मीदवार को किसी दूसरी सियासी जमात का जो इंतखाबी निशान है वो हरगिज़ अलाट ना करे। ये कानून की खिलाफ वर्जी है और उनका जो ये इस तरह का सर्टिफिकेट होगा उसको मुस्तरद कर दिया जाए। जी अच्छा, ये कानून की खिलाफ वर्जी है। अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है, आप ये भी बताया कि इन दरख्वास्तों के जरिए ये भी कहा गया कि इलेक्शन कमीशन को धोखा दिया जा रहा है, इलेक्शन कमीशन इस हवाले से मजीद क्या कह रही है? जी, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये वाज़ेह कर दिया गया है कि ये इलेक्शन कमीशन को धोखा देने के मुतरादिफ है। उम्मीदवारों की जानिब से कानून की खिलाफ वर्जी की जा रही है और पहले मरहले में रिटर्निंग अफसरान को ये मना कर दिया गया है कि जो कानून की खिलाफ वर्जी करने वाले हैं और जिनकी जानिब से धोखाधड़ी के तहत दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान हसूल के लिए जो दरख्वास्त आई है उसको फौरी तौर पर रिटर्निंग अफसरान जो है वो मुस्तरद कर दें और इलेक्शन एक्ट के तहत ऐसे उम्मीदवारों की मुस्तकबिल का फैसला जो है वो इलेक्शन कमीशन का करेगा। इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह किया है कि मुतअद्दिद दरख्वास्तें उनको मौसूल हुई हैं जिसमें बाद जो उम्मीदवार हैं एक सियासी जमात से ताल्लुक रखते हैं लेकिन इंतखाबी निशान के हसूल के लिए किसी दूसरी सियासी जमात का सर्टिफिकेट जमा करवा रहे हैं और इसी के पेश नज़र ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से अहम फैसला किया गया है। जी
ठीक है आतिफ बट ये भी बताइएगा कि ये कहा जा रहा है कि दरख्वास्तें दी गई, इलेक्शन कमीशन को इसके ऊपर धोखा दिया जा रहा है। इससे पहले खबर ये आई थी कि सियासी जमात के टिकट रिटर्निंग ऑफिसर्स के बाद दूसरी सियासी जमात के टिकट जमा करवाए जा सकते हैं, तो अब ये कंट्राडिक्शन नहीं है उस बात के? जी, इस हवाले से एक चीज वाज़ेह है कि जिस उम्मीदवार की जानिब से अपने नॉमिनेशन फॉर्म्स में ये मेंशन किया गया है कि वो कागजात नामजदगी जो है वो तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से या पीपल्स पार्टी या दीगर किसी सियासी जमात के प्लेटफॉर्म से जमा करवा रहे हैं, तो उस हवाले से अगर तो उनकी जानिब से ये मेंशन किया गया है तो उसके बाद ऐसे उम्मीदवार जो हैं वो उनको दूसरा किसी भी सियासी जमात का इंतखाबी निशान देने से वो लेने नहीं दिया जाएगा। ये इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है। अगर किसी जो उम्मीदवार ना कागजात नामजदगी में उम्मीदवार की जानिब से वो खाना खाली छोड़ा गया है या आज़ाद लिखा हुआ है तो वो आज़ाद तस्वर होगा, और किसी भी ऐसे उम्मीदवार को किसी भी दूसरी सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं दिया जाएगा जिन्होंने ऐसे कागजात नॉमिनेशन पेपर्स में ये मेंशन किया होगा। और अब इसको कानून की खिलाफवर्जी करार दिया गया है इलेक्शन कमीशन की जानिब से और धोखाधड़ी के मुतरादिफ भी करार दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आतिफ भट्ट साथ मौजूद थे। So therefore, while interpreting the Election Act, its role is a statutory role, not entirely a constitutional role, because Constitution does not require holding of inter-party elections after 2010. Now this is all under the Election Act or previously under the Political Parties Order of 2002. So therefore, my submission would be that ECP, for the purpose of the intra-party election, is now a statutory body performing statutory functions, and therefore these two judgments which pertain to statutory bodies, whether as ombudsman or whether as a competition commission, they are at par with that of Election Commission of Pakistan, exercising this function of regulating the पेशावर हाई कोर्ट का जो जजमेंट है हामिद साहब, उसमें उन्होंने लिख दिया है कि ईसीपी के पास कोई राइट ही नहीं है इंटर पार्टी इलेक्शन के बारे में बात करने का, देखने का। वो एक उनके सेक्शंस में है, तो अगर वो इसको चैलेंज नहीं करते तो वो तो उनके खिलाफ वो जजमेंट होता तो वो तो लॉ ही इनफेक्टिव हो जाता ना बात के लिए। देखिए वो एक और एस्पेक्ट है, बिल्कुल एंड वेरी एबली आर्ग्यूड बाय मिस्टर अली कि it has no jurisdiction, but the question is whether ECP as a constitutional body is any different to other statutory bodies in this regard, in this respect, only in this respect, where it is only exercising statutory function and statutory law. So therefore my submission is, for all intents and purposes, the election ECP performing functions under the Election Act is a statutory body, and has same law applies to it as that of Competition Commission or Ombudsman. Now the next submission is, we see Article 219 of the Constitution. Article 219 provides for various functions to be performed by the Election Commission of Pakistan. If Lordship kindly consider Article 219. So. Opposition So may I read Article 219. The Commission. हमने कई दफा पढ़ लिया, हाँ पॉइंट बताएं. This is the next point is that Article 219 provides for various functions to be performed by Election Commission. वो ई पे रिलाई कर रहे हैं. जी सर.
अब इसमें यही मैंने कहना था कि ये जो पहले 3-4 क्लॉजेस हैं उसमें डायरेक्टली उसको फंक्शन ये हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। ई में कहा गया है such other functions as may be specified by an act of Majlis Shura Parliament, meaning thereby the functions the ECP performs and with regard to matters of regulation of political parties, they do not fall within the first 4 clauses, fall within after an act of parliament as a statutory body it is performing that function. So under article 219 any अगर आप 220 भी पढ़ लें, हम ECP की कदर नहीं कर रहे हैं। प्रोवाइजो नहीं 220 पढ़िए, आर्टिकल 220। It shall be the duty of all executive authorities in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions. ये पावर सिर्फ एक और इदारे को है, वो सुप्रीम कोर्ट है। आप उधर आ जाइए आर्टिकल 190 में, all executive and judicial throughout Pakistan shall act in aid of the Supreme Court. Absolutely. तो सुप्रीम इनको इतना ज्यादा इख्तियार दे दिया है कि all executive authorities in the federation and the provinces, ठीक है, तो you can't, I mean, IG पुलिस नहीं कह सकता है कि मैं भी तो स्टैट्यूट के जरिए हूँ, आप भी स्टैट्यूट के जरिए हैं, सॉरी मैं आपकी बात नहीं सुनता, उसको सुनना लाजमी है। सर इसका लिमिटेड आर्गुमेंट का एक लिमिटेड फोकस है, मैं अर्ज करना चाहता हूँ। मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ whether the powers being exercised by election commission with regard to regulation of political parties, is that under E or A to D? My submission is under A, Act of Parliament. Correct. Under E. There's no debate on this, Ji. As well. 220 is not with regard to functions, is with regard to... But I'm just showing you the importance of this body. Of course, it's not with regard to it, but it has got... Even the High Court can't say this, what 220 says. But only the Supreme Court can do some of it. But they are differently worded. Let me read 190 and 220. पढ़ लिया हमने, हम आपको बता रहे थे कि 220 में देखें, it shall be the duty. All executive and judicial authorities throughout. हमारे पास it shall be the duty के लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुए हैं। Yeah. चलिए कंपेयर ना करें, मगर हम ये कह रहे हैं कि इनके पास बहुत इख्तियार हैं। बेशक, क्योंकि फेयर एंड फेयर इलेक्शन हुई तब सकती है। इसमें कहीं फ्री एंड फेयर की जिक्र नहीं है, एक स्टैंड अलोन प्रोविजन है, इनके इख्तियारात की बात हो रही है इधर। Yes, it can be. Yes, I'm not disputing that. 220 is an important article of the Constitution. मगर ये आपके आर्गुमेंट को तो चिजल अवे योर आर्गुमेंट। नहीं, अब बात सिर्फ ये है कि उसकी हैसियत एक सिचुएशन में क्या है और दूसरी सिचुएशन में क्या है। कुछ तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी की सिचुएशन में है A to D, बट E में it transforms itself into a statutory body by acting under statute. Still, it must have all the powers. I'm not disputing that, because without having all those powers, it may not be able to carry out its functions. High Court passes a writ, do not exercise powers. वो कहेंगे हम बैठ जाएं घर में बैठे हैं, कोई चैलेंज भी नहीं कर सकते ऑर्डर को। ये तो doesn't stand to logic at all. Why? नहीं, चलिए आप दूसरा पॉइंट बताएं ना। ये मुझे I can't, ये आप पहले कल भी यही बात कर चुके थे, मगर I can't agree. If I agree with you, then I completely undermine the status and the constitutionality of the Election Commission of Pakistan. No, sir, I'm not undermining that. I'm only referring to this to show that these two judgments which pertain to statutory bodies will apply to ECP as a statutory body. That is the argument. Limited argument. नोट कर लिया ना, आगे बढ़ते हैं। Limited argument. नहीं, आगे बढ़े ना, नोट कर लिया ना। So that's it. Well, next has been already argued by Mr. But I will show that ECP in its conduct and proceedings have clearly been discriminatory towards Pakistan Tehreek-e-Insaf, PTI. It has exercised double standards. How do I say it has exercised double standards?
I'll draw your lordship's attention. ये कह चुके हैं अली जफर साहब, ये बात आर्ग्यू नहीं कर चुके हैं? Partly argued that. Yes. मैं आपके जुरिस्डिक्शन में जा रहा हूँ, आप अपने दूध में Partly argued that, but I'm just trying to fortify that argument by referring to these pages, particular pages, page 314 to 316. Kindly consider part 2 of the paper book. Pages 314 to 316 are results of the intra-party elections of PMLN. Pages 318 to 322. ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट आपने पिटिशन में कौन सी ग्राउंड में, कौन से नंबर में लिया है? इसमें पिटिशन में अपनी पेशावर हाई कोर्ट की petition में there we have clearly taken the position वो of बताएं ना, वो वाला ग्राउंड कौन सा है आपका? grounds before the Peshawar High Court. खुद ECP ने लगाए हैं, उन्होंने थोड़ी लगाए। हाँ, वो तो ये आपने आर्टिकल 17 की तो बात की है, आर्टिकल 25 की बात आपने कौन से पैराग्राफ में की है? डिस्क्रिमिनेशन का होगा ये। और जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का कुछ जिक्र नहीं है? जजमेंट में तो उन्होंने फैक्ट्स को टच ही नहीं किया ना। नहीं, जजमेंट में भी डिस्क्रिमिनेशन का तस्करा नहीं है, और मुझे आपकी पिटिशन में सरसरी तौर पे मैंने देखा आपने डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया नहीं है। हो सकता है कहीं लिया, मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो अगर आप वो पॉइंट ना आर्ग्यू करें जो कि ना तो आपने लिया और ना हाई कोर्ट ने उस पर कोई फाइंडिंग दी। नहीं, कई चीजें जो हैं सर, दिस इज ग्राउंड W on page 49 page 49 ग्राउंड W आप पढ़ लें। और of the first paper book 1. May I read it out? That it is vehemently submitted that PTI has been discriminated against all other political parties who follow less onerous processes of holding intra-party elections in accordance with their own constitution. There are 175 political parties. ECP never examined a single political party like PTI or at all. This is itself violation of the due process of law and violation of the fundamental rights of the petitioner, including the rights protected under Article 4, 9, 10A, 11, 17 and 25. अब आप इसको सपोर्ट करें ना, आपने कोई देखें फिर आपको नहीं, एक सेकंड ये जो नहीं एक सेकंड है ये ना जी फिर आपको इन सब पार्टीज को आप रिस्पोंडेंट बनाना चाहिए था, पहली बात। फिर आपको हर पार्टी का केस अलग अलग लिखना चाहिए था। एक फ्लीटिंग स्टेटमेंट से देखिए, अब हम भाई 2021 में तो आप सरकार में थे, तो आपके पीछे ये क्यों दौड़ रहे हैं कि इलेक्शन करवा लें? वो तो सबको कह रहे थे इलेक्शन करवा लो। अभी उन्होंने पॉलिटिकल पार्टी, परसों हमने केस चलाया है, एक पॉलिटिकल पार्टी ने उड़ा दी, ठीक है, उसका वजूद ही खत्म कर दिया, और ये कह रहे हैं कि 13 और को हमने खत्म कर दिया है। तो ये तो नहीं कि आप ही पे ये कह रहे हैं, आपसे सिर्फ ये कह रहे हैं इलेक्शन कराएं और कुछ नहीं कह रहे हैं। सर वो अपनी जगह, लेकिन तो ये आपका कहना कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो कैसे आप कह सकते हैं? मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए 3 और पॉलिटिकल पार्टीज जिसका रिकॉर्ड यहां पर पिटिशनर ने लगाया है, उन्होंने ये शो किया है कि जितने ऑफिस बेयरर्स इलेक्ट हुए हैं सारे अनअपोज हुए हैं। इसलिए जनाब भाई कोई कंप्लेंट करे या बस खुद नोटिस ले लें? सर बात ये है, ये ECP पिक एंड चूज, कंप्लेनेंट तो हमेशा मिल जाता है, और कंप्लेनेंट यहाँ भी कहीं से हासिल किया गया, वो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं सिर्फ जनाब को डिस्क्रिमिनेशन का देखिए, डिस्क्रिमिनेशन इतने हल्के डबल स्टैंडर्ड्स नहीं, डिस्क्रिमिनेशन आपने कह दिया तो डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ना, नहीं कहने से, लेकिन ये कुछ थोड़ा तो आप हमें दिखाएंगे ना। भाई आप ये डिस्क्रिमिनेशन का पॉइंट लिया आपने जब 2021 में आपने उन्होंने आपको नोटिस दी कि मेरे इलेक्शन के पीछे क्यों पड़े हो, बाकी इलेक्शन से भी करवाओ उनसे। बिल्कुल सही नहीं लिया, आपने कहा जी कोविड-19 ने मुझे मोहलत दे दें साल की, उन्होंने कहा चलें जी साल दे दिया आपको।
तो यहाँ से तो पता चलता है कि डिस्क्रिमिनेशन है। मैंने 2021 में इलेक्शन कराया, इंटर पार्टी इलेक्शन, उस पर इलेक्शन कमीशन ने जो है नोटिस ले लिया और उसमें स्ट्राइक डाउन। आपको भी पता है अभी देखिए इलेक्शन ये जो मैटर है आपकी अपनी पार्टी से आवाजें उठ रही है ना, बाहर से उठ रही होती है तो हम कुछ बात नहीं करते। बात ये है अब वो वजूद्दीन साहब कौन से इलेक्शन करवा रहे थे, कौन सा साल था वो कितना बड़ा झगड़ा हो गया था। जी वो एक्चुअली मैंने ही कराए थे। उसके बाद एज ट्राइब्यूनल उन्होंने नोटिस लिया था जिसमें 3-4 नहीं वो कौन से इलेक्शन से, ये इंट्रा पार्टी इलेक्शन से। कब की बात है वो, ये 2012-13। तो देखिए ये कोई बाहर के लोग तो कोई उंगली नहीं रख रहा है ना कि ईसीपी ने तो आके नहीं कहा वजूद्दीन साहब को कि आप ये गलत हो गया वो गलत हो गया। हम इसी के पास नहीं गए थे, हम ईसीपी की कोई इस मामले में नहीं, तो वो फिर खुद छोड़ के चले गए कि नाराज हो गए, क्या हो गया, हुआ था क्या उसमें, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो इज अनदर स्टोरी बहुत। You know, but I'm just saying there is a history of thinking when you raise bias, prejudice, then we have to see your own conduct and the conduct of the Election Commission of Pakistan. If they pick up you for some targeting you for, every little T that you fail to cross or dot that you fail to put, we have to see the entirety of it. Then election has been, whether you like it or not, has been a problem. It's not outsiders. The people from your own founding members have been crying about funding. They've been crying about elections. Let them contest elections. यही मैं कह रहा हूँ, ये इंटरनल मैटर है पार्टी का। पार्टी में कोई चीज नहीं होती। पार्टी means the people. Very rightly argued. देखिए, party means the people. I don't differentiate between party and the people or the members of the party. उसके तो इंटरनल प्रोसेसेस है, उनको करने दें। आप ईसीपी का क्या काम है कि उसमें इंटरफेयर करें? वो ये कह रहे हैं इलेक्शन करवा दो, बस ये नहीं कह रहे कैसे कराओ। हाँ, ये उसके पास उन्होंने कहीं लिखा कि इस तरीके से कराओ। पेशावर के जजमेंट को कहीं उन्होंने डिस्क्रिमिनेटरी को टच नहीं किया, बल्कि मेरे हिसाब से तो ये रैम है ये ऑर्डर, क्योंकि ये तो सब पे अप्लाई होगा कि वो अंदर से इंट्रा पार्टी को ईसीपी देख नहीं सकती। इन व्यू ऑफ दिस जजमेंट, इट इज जजमेंट इन रैम इन माय व्यू, इट्स नॉट पर्सनल। उन्होंने कह दिया कि इलेक्शन कमीशन का कोई ताल्लुक नहीं है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में ईसीपी बात नहीं करेगी। तो वो तो फ्रॉम द मोमेंट व्हेन द जजमेंट इज पास द लॉ हैज बिकम चेंज। वो जो सेक्शंस हैं और फिर वो खुद कह रहे हैं कि 215 217 के तहत इनको इलेक्शन लड़ने दो, तो दैट वाज द 215 जिसके अंदर शो कॉज दी गई, वो पूरा केस चला है इसका 215 में। जी वो जो 2017 के लॉ के तहत, तो इसका 2017 के लॉ। देखिए अब आइंदा कोई पार्टी इलेक्शन कराएगी नहीं जी, इवन डमी इलेक्शन भी नहीं कराएगी। क्या करेंगे, खत्म हो गया है, पेशावर हाई कोर्ट का जजमेंट आ गया। इलेक्शन क्वेश्चन इज वेदर ए पार्टी इज। नहीं, वैसे मुझे एक देखिए बुनियादी सवाल ये है हामिद खान साहब जी, व्हाई आर यू अफ्रेड ऑफ योर ओन मेंबर्स? Not at all. Why can't you give a nomination paper to Mr. Akbar S. Ahmed and whatever 13 other? आ जाओ बाबा, मैदान में उतरो, लड़ो, देखो कितने पॉपुलर हो, 4 वोट नहीं मिलेंगे तुम्हें। सर मैं गुजारिश कर रहा हूँ, इसका जवाब तो अली जफर साहब ने पूरी तरह कॉम्प्रिहेंसिवली दिया है कि ये वक्त पे पहुंचे ही नहीं थे। हमारी दरवाजा तो खोल दें कि नॉमिनेशन पेपर दे दें, फिर हम क्या करें उसके साथ। नॉमिनेशन पेपर आफ्टर होल्डिंग ऑफ द इलेक्शन तो नहीं हो सकता ना। अगर मैं इलेक्शन में अपना नॉमिनेशन पेपर ही दाखिल ना करूँ तो मैं बाद में ग्रीवेंस हो सकता है मेरा कि भी मैं इलेक्शन में। अगर आप नॉमिनेशन पेपर दाखिल करते तो बहुत उम्दा इलेक्शन होता। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है। इन दिस केस Mr. Ali Zafar has already explained he never went to the election commission in time to file his papers, and therefore he cannot now claim that he should have been made a candidate. ये होल्ड एक एस्पेक्ट है। हामिद साहब पेज 20 पे आप जरा सा प्लीज देखिए, पेज 20 पे पेशावर की जजमेंट में द कंबाइंड रीडिंग ऑफ सेक्शन 208, 209 and 215 does not give any impression that ECP has any jurisdiction to question or adjudicate the intra-party election of political party. तो ये तो इन रैम है, ये सबके लिए हो गया, ये आज के बाद खत्म। आज के बाद सब पार्टी जो कब्जे में जिस पार्टी के हो गया, थैंक यू वेरी मच, मेरा कब्जा रहेगा। ये खत्म ही हो गया ना पॉलिटिकल पार्टी को। अब ईसीपी आज के बाद इलेक्शन क्यों करें, पाकिस्तान में क्यों इलेक्शन, अगर ये बात है। ये जो पेशावर हाई कोर्ट ने कहा है
basing it on the autonomy of political parties. Political parties are autonomous within the internal working. तो फिर वो 215 को चैलेंज करके उसको स्ट्राइक डाउन करवाएं, वायरिस खत्म करा दें उसकी 215 की. Then in future, no political party will be subject to the inter-party election. If the law it says and the varies are challenged and strike down by any court of law under Article 199. ये नहीं कहा सर, मैं अर्ज करूं, उन्होंने ये कहा है कि ये ऑटोनमस बॉडी है, ये इलेक्शन अंदर से अपने इंटरनल इलेक्शंस कराते हैं, इन्होंने सिर्फ सर्टिफिकेट देना होता है. जिस तरह चलिए ये बातें हो चुकी हैं, कोई नई बात करें ना जी. अभी भी नॉट, मैंने लिखना छोड़ दिया. ये नई बात होती है, मैं जरूर लिखता हूँ. 3 डॉक्यूमेंट्स. जी जी सर, एक आज डेवलपमेंट हुई है जिसके बारे में तो जो आपकी दुआ, इलेक्शन कमीशन ने आज एक फैसला दिया है, ये प्रोवाइड कर दें कॉपीज प्लीज. ये बड़ा क्लियर केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन है सर, अगर इसको देखिएगा जी. ये आपको अहम खबर से आगाह करें कि चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर पहुंच गए हैं. बैरिस्टर गौहर के बेटे आईजी इस्लामाबाद को वाक़े के हवाले से आगाह कर रहे हैं. आपको अपडेट करें, अहम खबर है, चीफ जस्टिस के हुक्म पर आईजी इस्लामाबाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर के घर पहुँच गए हैं. इसी पर मज़ीद बात करते हैं उस्मान भट्ट से. जी उस्मान, बताएगा इस हवाले से. जी बिल्कुल, आईजी इस्लामाबाद डॉक्टर अकबर नासिर खान जो हैं वो बैरिस्टर गौहर के घर पहुंच चुके हैं. आज दिन में जब वो सुप्रीम कोर्ट में थे, अपने दलाइल दे रहे थे, तो इसी दौरान उनको इत्तला मिली कि उनके घर पर छापा जो है वो पुलिस ने मारा है, जिसके बाद वो फौरी वहां से रवाना हुए. और उसके बाद तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये बयान सामने आया कि गलतफहमी की बुनियाद पर जो है ये कार्रवाई अमल में लाई गई है. इश्तिहारी मुलजिम था, उसको गिरफ्तार करने के लिए जो है वो कार्रवाई अमल में लाई गई थी, लेकिन जब मालूम हुआ कि ये घर जो है वो मुतलका घर नहीं है जहाँ पर पुलिस ने छापा मारना था, बल्कि ये बैरिस्टर गौहर का घर है, तो उसके बाद पुलिस वहाँ से रवाना होगी. उसके बाद जो है वो एक वीडियो सामने आई, उसमें बताया गया कि किस तरह से जो है वो कुछ चीज़ें वहाँ से, लैपटॉप्स और दीगर जो सामान था वो वहाँ से पुलिस जो है अपने साथ ले गई. इस वक्त जो है वो डॉक्टर अकबर नासिर खान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद हैं, और जो मुतलका सिटी जोन के एसपी हैं अलीम, वो भी उनके हमरा वहाँ पर मौजूद हैं, और बैरिस्टर गौहर से वो तमाम इस वाक़े की तफसीलात जो है वो दरियाफ्त कर रही हैं. जी ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया. ये काम की इजाजत देता है, वो आप उस पे फोकस कीजिए ना. डिस्क्रिमिनेटरी, ये डिस्क्रिमिनेशन ऐसे नहीं बनेगा है. लेकिन मैं अर्ज करूं, एक बेसिक प्रोपोजिशन है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ की, देयर कैन बी अ डिस्क्रिमिनेटरी लॉ struck down on that account. There can be a law which is not discriminatory ex officio, but is exercised in a discriminatory manner. Correct. That is equally bad. Correct. Agreed. Article 25 की equal protection. यहाँ मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, जिस लॉ के तहत ये पावर एक्सरसाइज कर रहे हैं वो डिस्क्रिमिनेटरी मैनर है. यानी एक पार्टी को तो वो कहते हैं ये सिंबल आपको दे दिया, आपको सिर्फ इंटर पार्टी इलेक्शन ना कराने की सजा में 20,000 रुपए दे दिए. अच्छा, एक इलेक्शन कराने की इजाजत दे दी. 1 मिनट रुक जाइए. जब इन्होंने आपको 2021 में नोटिस दी थी और फिर 1 साल बढ़ा दिया था, एएनपी कहेगी आप पे 2 लाख रुपए का फाइन क्यों नहीं लगाया? वो देखिए ना, उधर तो डिस्क्रिमिनेशन आपके फेवर में हो गया ना. जब 2021 में आपको नोटिस दी इलेक्शन कराओ, आपने कहा जी कोविड 1 साल की मोहलत दे दें, उन्होंने कहा चलें जी. उधर उन्हें कोई बगैर फाइन के आपको कर दिया. फिर आप ये भी एएनपी कर कि वहां तो उनको डिस्क्रिमिनेशन उनके फेवर में कर दिया. कुछ कॉन्सिक्वेंसेस हैं इसके, कुछ कॉन्सिक्वेंस. मगर देखिए आपके अपने कॉन्सिक्वेंस, आपका मसला ये हो रहा है ना, ये आपके पीछे पड़े कब से इलेक्शन की खातिर. आज की बात नहीं है, जब आपकी अपनी हुकूमत थी ना. अब आज की बात होती है, आप कहते देखें सेटअप चेंज हो गया, या पीडीएम आ गई, या केयरटेकर्स आ गए, हमें तंग कर रहे हैं. मगर ये जब आपकी अपनी हुकूमत थी, उस वक्त से ये कह रहे हैं भाई इलेक्शन कराओ, और आपने तस्लीम कर लिया मैंने नहीं कराया है, मुझे वक्त हमें टाइम दे दें. हाँ ठीक. तो उधर आपने ये कोई बात नहीं की कि डिस्क्रिमिनेशन है कुछ, और आपको थ्रेट भी दे रहे हैं, अगर आपने नहीं किया मैं आपका इलेक्शन सिंबल ले लूंगा. सर वो अगर एक ऑर्डर पास किया है वो डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर नहीं था. मगर आप लीगल बात करें ना, आपने कहा ये तो आप सब फैक्ट्स में जा रहे हैं. नहीं, मैं तो फिर
exercising powers in a discriminatory manner. नहीं, अगर आपने अलाउ कर दिया इलेक्शन सिंबल हमें क्यों नहीं कर रहे? आपने कहा you will attend to some constitutional points which I am not hearing. The point is that they are not treating all parties equally. वो हमने we got it. आगे बढ़ते हैं. जी. So ये मेरा कम से कम पॉइंट नोट फरमाइएगा. Discriminatory treatment. This party not equally and in a discriminatory manner. One of the examples is that one of the political parties has not held intra-party election, has been given time till May to hold it, and they have also been given election symbol. Why not the same treatment to us? Noted. Yes. As a matter of interest, are you contesting elections this time? आप इलेक्शन लड़ रहे हैं? नहीं आप जानते हैं. हाँ नहीं, मैं तो नहीं लड़ रहा, लेकिन मेरा पर्सनली लड़ने के इसमें कोई नहीं, मैं ऐसे पूछ रहा हूँ. I'm too old to do that physical exercise. Because the last one you contested, that's why I wanted to. मैं एक दफा contest किया है, and that was stolen from me. I had won that. No, ऐसे पूछ रहे हैं आपसे. थोड़ी वो बात, मैं इसीलिए बात वो अपनी पर्सनल ये नहीं बात करता. मैं चल रहा हूँ. Next submission. Now, sir, the way the intra-party elections, they have interpreted as if it is a mandatory provision. It is there in the Election Act, but covered this ground. It is not. My submission is not a mandatory provision. On this, I rely on two judgments already relied upon by Mr. Ali Zafar. He covered हो चुका है ना ground. इंटर पार्टी इलेक्शन वो उन्होंने भी ये बात की है. Not mandatory. जी. That provision is not a mandatory provision, and a party cannot be made to suffer or made to be thrown out of election process on that account. This Article 17 is the one that will prevail over any provision of the ordinary law. Correct. So therefore, I am relying on both the judgments which have been elaborately read out before your lordship. PLD 1989, Supreme Court 66, Benazir Bhutto's case. Then the other is PLD 1993, Supreme Court 473, Mian Nawaz Sharif's case. Yesterday, during the course of argument, that before the Peshawar High Court, we did not seek declaration that we have held the elections correctly in a valid manner. My submission is, this is one of the objections they have taken. My submission is, my petition under Article 199 is not with regard to seeking a declaration. It is with regard to praying before the court that we have held the elections, and the EC's interference is something which may be declared as without lawful authority of no legal effect. In this regard, I'll read Article 199. What do we seek in certiorari? So this is Article 199, 1B, 1A, तो आपने मांगा है ना, आपने कहा इम्प्यून जजमेंट को डिक्लेयर करें इलीगल. ईसीपी के जजमेंट को या ऑर्डर को आपने डिक्लेरेशन तो सीख की है पेशावर हाई कोर्ट से कि इसको इलीगल डिक्लेयर कर दी. तो डिक्लेरेशन तो मांगा है आपने. आप कह रहे हैं हमने डिक्लेरेशन नहीं मांगा. Yes, sir. It says settled law that yes, we seek declaration that their act is. What is the point? What is the 199 point? जी. Point ये है that I'm reading Article 199. Subject to the Constitution, the High Court may, if it is satisfied that no other adequate remedy is provided by law, A, on the application of any aggrieved party,
make an order, इसमें clause 2, declaring that any act done or proceedings taken within the territorial jurisdiction of the court by a person performing functions in connection with the affairs of the federation, a province and a local authority has been done or taken without lawful authority and of no legal effect. I'm seeking that declaration, not a declaration that my elections are valid. They are valid, I presume, and we say their interference is without lawful authority and of no legal effect. So therefore, they are saying that they should have sought declaration from ECP that my. अगर आप strict sense में जाएंगे तो you run into trouble. अब 2 में देखें, declaring that any act done or proceeding taken within the territorial jurisdiction of the court. Now ये तो आप तस्लीम करते हैं कि इलेक्शन कमीशन ने ऑर्डर पास कर दिया इस्लामाबाद में. It's not the territorial jurisdiction of the court. ये अगर हम strict sense में जाएंगे ना तो it will cut both ways. By a person performing functions in connection with the affairs of the federation. They'll say we don't perform functions with the federation, we perform constitutional functions. Yes. Or a province. They'll say we don't do this either. We don't do local government functions. तो ये अगर हम ऐसे interpretation में जाएंगे तो if we go to the strict language, they may come up and say High Court has no jurisdiction on territorial ground and on grounds that we're not doing any of these things. We are doing elections. Is a body functioning in all the provinces. Correct. And the federation. But they can declaring that any act or proceeding taken within the territory. अगर हम strict to sense में जा रहे हैं ना तो इसमें आपका फायदा मुझे नहीं नजर आएगा क्या है? इसका how does it help you? This is only an answer to their objection. Their objection was... they have conceded. In fact, I was surprised, but Mr. Makhdoom Ali Khan conceded. He says, yes, Peshawar High Court has jurisdiction. But having elected to go to Lahore High Court, you could not go to Peshawar. That's what I recollect his argument. I thought he's going to say that it doesn't have a jurisdiction, and he conceded. This is your Lordship's impression. Nothing more I have to say about it. सर खत्म करें, थोड़ा सा जल्दी करें. बस जल्दी कर देता हूँ. आप बुरा ना माने, हमें बुरा लगता है आपको कहते हुए भी. My submission is it has been held by a number of judgments cited there that the right to participate in an election is a fundamental right of a political party. This has been... ये राइट वो कह रहे हैं मुझे भी दे दो. आपके जो 14 मेंबर बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं ये राइट हमें भी दे दीजिए प्लीज. जनरल इलेक्शंस की बात मैं कर रहा हूँ भाई. राइट ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी टू पार्टिसिपेट. कोई डिनाई नहीं कर रहा है आपका राइट है, वो कोई डिनाई नहीं कर रहा है. वो कह रहे हैं मेरा राइट तो दे दो पहले, फिर आपका राइट आएगा. राइट तो अभी है ना कि अगर ही वाज एंटाइटल्ड टू दैट, अगर वो वक्त पे पहुंचते ही नहीं, ये तो यही तो बात है असल. व्हाई ए पर्सनस ECP is taking so seriously somebody's complaint in internal working of a party. They know better who is a member, who reached at what time to submit its nomination papers. This is a factual matters should be left alone to the party. ECP has no business to interfere in that. So therefore these matters are factual matters within a party. Actually, unnecessarily, election commissions enter into factual details about the intra-party election, which does not have the jurisdiction, as very rightly pointed out by Mr. Leadership. Now, sir, two more submissions, and that's it. I will not take your Lordship's time. ECP... Time you may take, but then you may suffer the consequences. Your Lordship you want to suffer the consequences. I should conclude early so that... Yes. Actually, the ECP is targeting the party symbol of PTI. By and again... But ये allegation आपने नहीं लगाया. देखिए, ये allegation target की बड़ा clear on the face of the whole record. It is PTI being picked out of all other parties for intra-party election, entertaining complaint by anybody making any kind of complaint or maybe. So these are why PTI is being picked up. Why they want to deprive it of participation in the election by depriving it of election symbol. That is where it
is undoing the democratic process in Pakistan. My submission is that the interference and order passed by the Election Commission virtually takes away the democratic right of millions of citizens of Pakistan who want to vote for PTI and their chosen candidates. Why are they being deprived of because depriving election symbol means you're depriving all those voters who are willing to vote for that political parties and their nominees. This is outbalance all other considerations. Very correctly pointed out by Mr. Ali Zafar, it is against the idea of proportionality, against the very principle of proportionality for something very minor. Within a political party, you are punishing millions and millions of citizens of Pakistan. This maybe a dramatic argument, but can you turn to page 41 of your petition before the High Court? Page 41 of the paper book, which is your petition, and read paragraph 33. That in the meantime, as part of design, 14 persons who are not members of PTI filed it's under no provision of the आपने कहा we are not members of PTI. Yes. So when you're concerned about millions of persons, what harm will be done to if they were contested in election? If you are saying they're not, तो आपने कोई disclosure नहीं कर रहे हैं, किस basis पे आप इनको माना कर रहे हैं? बाकी तो चलें कुछ भी हम मान लेंगे, मगर अकबर अहमद का तो आप खुद तस्लीम कर रहे हैं, फाउंडिंग मेंबर है वो. सर फाउंडिंग मेंबर who turns against his party, तो क्या वो पार्टी ये नहीं है. देखें, he is not running against it. He is saying do things properly according to law. हो सकता है उनका मौके गलत हो. जी अब पार्टी फंडिंग सही करें, आप इलेक्शन सही करें. अब ये it doesn't mean कि you are, देखें, the greatest strength comes from those who oppose from within. ठीक है कि जी ये ऐसे ना करो. और अमेरिका में भी जो some of the greatest judgments were initially in minority and later on became the majority because they maybe had greater foresight, saw what should have been, and they had greater vision, but they were in a minority. But subsequently, with a lapse of time, they became in a majority. So ये किधर से आप इनको कह रहे हैं मेंबर नहीं है? आपने कह दिया काफी है. मैं आपको दो नहीं कैसे आप कह रहे हैं मेंबर? दो मिसालें, क्योंकि आपने खुद देखी तस्लीम किया है फाउंडिंग मेंबर है, फिर किधर से चला गया ये? At some point in time, a founding member can have differences with his party and leave the party. That's called democracy. परसों ही एक इंसिडेंट हुआ है. नहीं परसों की बात नहीं कर रहे, केस की बात. नहीं आप इसका जवाब दे देना. आपने किस बेसिस पे तयन किया है कि ये मेंबर नहीं है आपके? इसके ऊपर पार्टी का मौकिफ आया है कि he was given show cause notice. दिखा देना वो show cause notice. सर वो तो लगाया हुआ है. कहीं नहीं लगाया. In any case. नहीं in any case नहीं दिखाई है हमें. देखिए आप हम सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं नैनी केस. देखिए 205 में लिखा हुआ है कि आप किसी मेंबर को निकाले तो तरीकेकार भी दिया हुआ है. आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि उसको आप रखें, वो फॉलो किया होगा ना, वो दिखा देते ये देखिए हमने इसको निकाल दिया, खत्म. वो तो आपके सामने चैलेंज नहीं हुआ ना मामला के आया. देखिए एक आदमी आपने प्ली ले ली ना, आपने कहा ये मेरा मेंबर नहीं है. वंस यू एडमिट मेरा मेंबर है और फिर क्या मेरा मेंबर नहीं है, बर्डन इज ऑन यू. चलें तो इस पे तो कोई दो राय नहीं होगी ना. चैलेंज नॉट अस. Yes, the party will defend, but let him challenge that. There is no court proceedings under which or any other law under which he has ever challenged that. So why this is a matter within the party? मैं सिर्फ कल आपकी बात का जवाब दे रहा था कि there is a founding member of this party which has publicly joined MQM only 3 days back. So does he remain being he has been consistently for 27 years member of this party. So any person can. नहीं
हो सकता है कल आप ज्वाइन करें। नहीं, आप ये तो फिर आपने एक प्रूफ दे दिया ना। अब बाबर एस अहमद साहब के लिए भी प्रूफ दे दें कि उन्होंने फलां पार्टी ज्वाइन कर ली, बात खत्म। अब ये आपके देखिए, मेराज मोहम्मद खान साहब तो शायद इस पास्ट हुए, अब्दुल अजीज खान साहब हैं पार्टी में, छोड़ गए थे। मैं मेराज मोहम्मद खान साहब की ही एग्जांपल देने वाला था। ही वाज ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ पीपीपी बट ही हैड डिफरेंसेस इन 1970। तो आपकी पार्टी में आ गए, ही लेफ्ट। आपकी पार्टी में आ गए ना, तो ये नाम आपने लिखे हुए ना। अब ये फौजिया कसूरी साहिबा हैं या चली गई हैं? तो देखिए, जिनके नाम फाउंडिंग डॉक्यूमेंट में, कम से कम आप उनको तो आप इग्नोर नहीं कर सकते ना। क्यों एक तो इस वक्त मामला पार्टीज की इंटरनल वर्किंग का नहीं है। इस वक्त तो ये है कि आया पार्टी को पार्टी सिंबल मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। चलिए ये बात आगे बढ़ाए ना, ये बात बार सुन चुके हैं। मेरी गुजारिश ये है कि डिनाइंग पार्टी सिंबल, आगे खान साहब वी हर्ड दिस ना, सिंबल वाली बात, वो सिंबल वाली हमने बात सुन ली। अब हमने आपसे एक सवाल पूछा तो आप उसको कहते हैं चलें उसको छोड़ें। 205 सेक्शन 205 है, फिर उसको भी डिक्लेयर कर दें अनकॉन्स्टिट्यूशनल इलेक्शन एक्ट का, कि अगर आप मेंबर को निकालना चाहे खुशी से निकालिए, अब कब मना कर रहे हैं? अगर एक तरीक़ेकार है निकाल लीजिए उसके तहत। सस्पेंशन और एक्सपल्शन ऑफ अ मेंबर 205 में लिखा हुआ है, क्या हम इसको भी इग्नोर करें? आप कहते हैं चलें जी छोड़ें उसको। क्यों छोड़ें हम भाई? वो हमारे सामने खड़े हुए हैं ना, यही तो मसला है। अगर वो नहीं आते, अगर सिर्फ इलेक्शन कमीशन आता तो फिर हम छोड़ देते इस बात को। सर गुजारिश ये है कि अगर यहाँ एग्रीवेंस सेक्शन 205 का है, देन ही वुड हैव बीन ए पिटिशनर दैट he has been expelled। आप दिखाइए ना, मैंने ये एक्सपेल किया हुआ है। तो क्वेश्चन जनाब के सामने है ही नहीं है, क्योंकि आपने पिटिशन में कह दिया कि मेरा मेंबर नहीं है ना, तो आपके कहने से बस काफी है पार्टी से नहीं। अगर इसमें इनका डिफरेंस है तो पार्टी को सू करते एंड वुड हैव चैलेंज दैट टर्मिनेशन। मेरा कोई डिफरेंस नहीं है, मैं तो पार्टी में काम करना चाहता हूँ। दैट इज समथिंग टू बी डिसाइडेड by a court if he challenges his termination. That is not being challenged before this honorable court. If you were in his place tomorrow, how would you feel? I will go to a proper court. Why would you challenging go? my No, you under should show me. मैं 205 के तहत मैं challenge करूँगा। No, you don't prove a negative. You prove a positive. If they had expelled you, you will go to a court of law and say this expulsion is unconstitutional. If there is nothing there, why should you go to a court of law? You are a member. Khatam. The party is denying my membership. He should go and prove before a court of law. पार्टी हो फिर को मैं ही डिनाई कर रहा हूँ, तो देखिए सेल्फ सर्विंग आर्गुमेंट तो नहीं चलेगा ना। ये चलिए खैर आगे बढ़े। We have to conclude this now. मेरी गुजारिश ये है कि denying party symbol, ये एक अलग बात, is going to disenfranchise millions of voters who want to vote for the candidates nominated by PTI. ये आपने कह दी बात, हमने नोट कर ली। Next point. The result, what is it that is before this honorable court? That is objectives resolution article 2(1) is being violated. देखिए अब एक बात आ जाएगी, do you deprive 850,000 of your memberships the right of vote? You can't say कि मेरे लिए ये होगा स्टैंडर्ड और दूसरे के लिए ये होगा स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड हैज टू बी द सेम। उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। यहाँ सिटीजंस ऑफ पाकिस्तान इन मिलियंस 5 करोड़ हो सकता है वोटर हमारे हो, आज बाय दिस एक्ट ऑफ ईसीपी दे आर बीइंग डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू वोट व्हिच इज अ फंडामेंटल राइट। खान साहब ये बात हम कितनी दफा सुन चुके हैं ना, ठीक है ना। अब इसको आगे बढ़ाए ना बात को, इसको आर्टिकल 2A के तहत भी देखें ना, हमने पढ़ा हुआ आर्टिकल जनाब की, ठीक है, लेकिन मुझे भी पढ़ लेने दें। हाँ पढ़े मगर टाइम की बात है फिर। 2A, the principles and provisions set out in the objectives resolution produced in the annex as hereby substantive part of the constitution and shall have effect accordingly. अब इसको annex पढ़ेंगे तो उसमें जो पहली चीज दी गई है वो chosen representative की बात की गई है। सर इसमें ये कहा है wherein the
wherein states shall exercise its powers and authority through the chosen representatives of the people. अगर एक political party जिसकी perhaps बहुत बड़ी following है उसको election से बाहर कर देंगे तो फिर उस state को कौन represent करेगा? chosen representative तो बहुत सारे फारिग हो गए. नतीजा क्या है ऐसे election का जिसमें एक popular party with following is deprived of contesting the election, participating in the election. It virtually deprives and deprives millions of vote of their follower. Even ये बात million वाली बात हो गई ना, आगे बढ़ते हैं ना. अब ये हमने we've noted it many times. It's against the principle of chosen representative. अब आखिरी बात मैं कहूँ. Sir, this is a fundamental principle of constitutional jurisprudence, that the Constitution is equally a legal and a political document. So no court, while interpreting the Constitution or its provisions, can ignore the political consequences of its decision, has to consider the consequence of its decision, what will be the political consequences, because political parties have political implications, and Article 17 is there to protect the political rights, and the most important right is the right of vote. So therefore, the entire political polity and the Constitution virtually would disenfranchise tens of millions of voters, which will render the election and its results as without legitimacy and without credibility. So therefore, depriving citizens of the right of vote will have very, very serious consequences for the future of the country, and will have the assemblies elected without full representation of all the voters and all the political parties, will render the election as not legitimate and not credible. So that is something which I'll appeal before this Honorable Court to see that these consequences should not follow, and this consequence is of a very serious nature, and I'll appeal before this Honorable Court that such decisions at times have implications running into years and years. Even today, some of the decisions taken by this Honorable Court, we quote them, that has really hurt our polity over the years. Even 70 years have passed since Maurito Mizu's case, we keep talking about it. So therefore, every decision being made by the Apex Court has to see what will be its consequences. Thank you very much. Thank you. जी लोग किधर हैं? आप क्या कह रहे हैं? कोई और भी है या नहीं? बिलीव क्या आज है ना, शक्ल दिखाएं. मैंने सुना इन्होंने कहा कि others are in person. I am only representing respond number. Who are the others in person? Naturally वो आप ही की बातें अडॉप्ट करेंगी ना, और तो नहीं करेंगे. I have to disclose that before the commission, I did represent, but I have not been instructed to represent them today before this court. मैंने उनको commission में आइडेंटिफाई तो करा सकते हैं, वो भी नहीं करा सकते हैं. जी मेरा नाम यूसुफ अली है. एक सेकेंड. साबिका इलेक्टेड जनरल सेक्रेटरी. एक मिनट. क्या नाम है? यूसुफ अली. जी आप क्या हैं? मैं जी 2013 इलेक्शन में जनरल सेक्रेटरी था, जो इलेक्शन अहमद खान साहब ने करवाए थे. किस पार्टी के हो? लेकिन साहब जी बचपन से. अच्छी बात है. 2013 का जनरल सूबा इलेक्शन भी मैंने लड़ा है तरीके इंसाफ से. MPA स्वाबी वन से. हाँ जी. आप जीते थे, हारे थे? जी मैं हारा था. ठीक है. तो आपको क्या इंतखाब में हिस्सा लेने दिया या नहीं दिया इन्होंने?
मैं जी ऑफिस गया था, जिसकी वीडियो भी बनी है, सेंट्रल सेक्रेटरीट। हम भाई आप वीडियो को छोड़े, आप बता देना, जबानी बताइए। मैं गया था, मैं उधर ऑफिस में जो लोग थे हमने उनसे मालूमात चाही। हमसे पहले भी उधर लोग, अब बलूचिस्तान के लोग भी आए हुए थे सुबह से कि हमें नॉमिनेशन पेपर चाहिए, हम इस इलेक्शन में हिस्सा लेना चाहते हैं। तो किसी के पास कोई जो है मालूमात नहीं थी। तो फिर इलेक्शन कमीशन में आप लड़ना चाह रहे थे इलेक्शन? हाँ जी बिल्कुल लड़ना चाह। आपने कोई और पार्टी ज्वाइन कर ली है? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक, अगला कौन है? आपका नाम क्या है? मेरा नाम जी महमूद अहमद खान है। महमूद अहमद खान। मैं PTI में 2006। महमूद अहमद खान जी। मैं 2006 से PTI में दोहा कतर में जब था तो मैंने ज्वाइन किया था, और खान साहब का वहाँ मैंने फंक्शन भी करवाया था रमादा होटल में। और 2010 में मैं रिटायर होके केम डाउन टू इस्लामाबाद एंड स्टार्टेड वर्किंग विद PTI इस्लामाबाद जी ऑफिस। एज व्हाट? मेरा थोड़ा सा आप क्या करते थे उनके दफ्तर में? क्या काम करते थे? काम क्या करते थे आप? I joined them as an ordinary member. Then I was given the 2 tasks. I was made in charge of the media, and I was also made coordinator of Islamabad. Coordinator. तो आप किस पार्टी में हैं? आप किस पार्टी में हैं आप? PTI में मैंने जिंदगी में एक ही पार्टी ज्वाइन की है, उसी में रहना है, उसी में रहूंगा। That is PTI असल। आपको इलेक्शन लड़ने दिया या नहीं दिया? इंटरनल इलेक्शन का बिल्कुल मेरा इरादा था, और बात ये थी कि मैं किस बात का इलेक्शन लड़ूं। मुझे कई पोजीशनों का नहीं पता था, मुझे प्रोसेस का नहीं पता था, मुझे और लिस्ट का नहीं पता था। मैंने इलेक्शन, मेरा प्रोग्राम था, मैं इस्लामाबाद से हूं तो मैं फोकस इस्लामाबाद पे करूंगा, लेकिन देयर वाज नो इंफॉर्मेशन। नॉमिनेशन पेपर दिया आपको या नहीं दिया? नॉमिनेशन पेपर दिया या नहीं दिया? नहीं सर, नहीं, इन्होंने अनाउंस ही नहीं किया कि कौन कौन सी पोजीशंस का इलेक्शन होना है। नॉमिनेशन तो उसके बाद आता ना, पहले ये बताते कि ये इलेक्शन पोजीशन है। इनको आपसे क्या प्रॉब्लम है? मुझे प्रॉब्लम है। इनको क्या प्रॉब्लम है आपसे कि आपको नहीं दिया? ये तो उनसे पूछे। मुझे शायद, मैं डेमोक्रेटिक, आई बिलीव इन डेमोक्रेसी। आई बिलीव कि पार्टी के अंदर डेमोक्रेटिक राइट होना चाहिए, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को एक्सेप्ट करना चाहिए, पार्टी में फाइनेंसेस क्लियर और उसका क्लियर ऑडिट होना चाहिए। ये कल्ट में कन्वर्ट ना करो। We want democracy in the country, and it starts from the party. And if there's no democracy in the party, there will be no democracy in the country. ठीक है, क्या वो आप बीबी को बताएं, अपना तारुफ कराइए। ये कौन सी रेस्पोंडेंट है? नंबर 11। नाम क्या आपका? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नौरीन फारूक खान। आप किस पार्टी में हैं? जी मैं PTI मैंने 99 में ज्वाइन की थी और बहुत सारे ओहदों पे रही हूँ, मतलब कराची। आप किस ओहदे पे थी या ओहदा नहीं था? नहीं, मैं भी आपको सारे ओहदे बता देती हूँ। मतलब 99 में एज अ वुमेन विंग की प्रेसिडेंट मैं कराची की थी। उसके बाद एक जरा आहिस्ता, वुमेन विंग प्रेसिडेंट कराची। उसके बाद फिर 2003-04 से मैं इमरान इस्माइल साहब जो कि सिंध के प्रेसिडेंट थे, उनकी सिंध की वुमेन विंग की प्रेसिडेंट थी। जी 2009 में हमारा लेबर विंग बना, तो उसमें मैं पहले तो पंजाब की एज ए जनरल सेक्रेटरी आई। 2009 पार्टी का लेबर विंग बना, जिसके प्रेसिडेंट थे जुबैर खान। तो उनके साथ मैं पंजाब से पहले आई, फिर लेकिन उन्होंने मुझे मरकज में ले लिया अपने साथ, प्रेसिडेंट वुमेन विंग लेबर। उसके बाद फिर लेबर पॉलिसी कमेटी बनी हमारी, जो कि राना समी साहब थे, उनके साथ मैं लेबर पॉलिसी कमेटी की भी मेंबर थी। लेबर पॉलिसी कमेटी। Then afterwards, एक सेकेंड, लेबर पॉलिसी कमेटी। उसके बाद नईमुल हक साहब इधर शिफ्ट हुए कराची से, मतलब ही वाज डाइड 2 years back। नईमुल हक चीफ स्टाफ ऑफिसर ऑफ इमरान खान। तो आई यूज्ड टू असिस्ट हिम इन द सेंट्रल ऑफिस एज हिज एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट। सेंट्रल ऑफिस एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट टू चीफ ऑफ मिस्टर नईमुल हक। जी नईमुल हक। और उसके उनका डेजिग्नेशन क्या था? जी वो चीफ स्टाफ ऑफिसर थे इमरान खान के, टिल ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, टिल ही डाइड। नहीं, पार्टी में क्या होता था? वही चीफ स्टाफ ऑफिसर थे, मतलब ही वाज मैनेजिंग टाइम ऑफ इमरान खान चेयरमैन। अब आप किस पार्टी में? मैं इसी पार्टी में हूँ। और लास्ट जो इंसिडेंट हुआ है, जिस दिन इमरान खान साहब को इधर अदालत में पेश किया गया,
और उमर अता बंदयाल साहब की उसमें, तो आई वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड द सुप्रीम कोर्ट, जिसकी मेरे पास वीडियो भी है, और मेरे साथ थे हमारे डीर अपर डीर। नहीं, अभी आप इलेक्शन लड़ना चाह रही थी जी? पार्टी इलेक्शन में कंटेस्ट करना चाह रही थी, क्योंकि मुझे ये था कि एज पार्टी पॉलिसी और पार्टी के आइन के मुताबिक कि हर पर्सन को राइट है इलेक्शन का, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा सबमिसिव किस्म की बंदी हूँ, मतलब शराफत ईमानदारी से चलने वाली। तो मैंने कहा शायद इस तरह मुझे मौका मिल जाए कि मैं किसी तरह किसी उस पर आ जाऊँ कि मैं हाईलाइट हो जाऊँ। तो डेट्स वाई आई जस्ट वांटेड टू कंटेस्ट द इलेक्शन। और मैंने ऑफिस फ़ोन करके भी पूछा, मतलब वहाँ पे जो बैठे हैं, आई विल नॉट कोट देयर नेम्स, बट दे सेड इट कि मैडम ऐसा तो कुछ भी नहीं है, बस आप समझे इलेक्शन ऐसे ही हो रहा है। तो देन आई सेड ओके। और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ और जिस तरह हुआ वो आप सबके सामने है। नहीं, हमें नहीं पता कुछ, आप कुछ कहेंगी तो पता चलेगा। चले, वो तो जो भी हुआ है जैसे भी हुआ है, क्योंकि आपका सेंट्रल सेक्रेटेरिएट G8 में है, तो ये था कि मरकज के G8 में क्या कोई सेंट्रल सेक्रेटेरिएट है, उसके पीछे बहुत खुली जगह, सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह आज के G8 में कोई घर है या नो इट्स अ बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग? नो, अपनी बिल्डिंग बनाई है PTI ने। कितनी मंजिला है? आई थिंक 3-4 मंजिला है। ऊपर टॉप फ्लोर पे काफी उसके स्पेस है और पीछे बहुत बड़ा लॉन है। अच्छा, ठीक। तो बाकी है कि मुझे इलेक्शन आप लड़ना चाह रही थी? जी बिल्कुल, मैं लड़ना चाह रही थी। और सेकेंडली बात यह है कि मुझे नेमुल हक साहब लेट और इमरान खान साहब भी कहते थे ये मेरी पार्टी का असासा है और मेरी बहुत पुरानी नजरियाती कारकुन है, और मुझे कहते थे ही इज इंसाइक्लोपीडिया ऑफ PTI, कि आप इससे पूछ लें कि किसने कब ज्वाइन किया और किसका क्या बैकग्राउंड है। अच्छा, चलें। और कौन साहब है? आपका नाम? बिलाल अजहर राना जी। बिलाल अजहर राना। अजहर राना, ठीक जी। मैं फाउंडिंग मेंबर हूँ। 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो उसी टाइम। बिलाल अजहर राना। इसमें तो आपका नाम नहीं आ रहा है फाउंडिंग डॉक्टर। ये फाउंडिंग में मैं वाहिद बंदा हूँ जो मेंबर हूँ, मतलब ये है कि फाउंडिंग लीडरशिप में नहीं हूँ। आप कब से पार्टी में? पार्टी मैं 25 अप्रैल 1996 को पार्टी बनी तो 2 हफ्ते के बाद हमने तारीखी जलसा पहला टेक्सला के मुकाम पे। नहीं, वो कौन सा साल था? 10 मई 1996 को। उस वक्त से आप पार्टी में है? कोई और पार्टी ज्वाइन की आपने? नहीं, मेरी 18-20 साल उम्र थी, मैंने पहली पार्टी जो है वो बनाई भी, इसमें काम भी किया। और लाहौर में अगर पहला जलसा हुआ 97 में, यानी कि पहला कॉर्नर में, कोई ओहदे पे गड़ी चाहू में। कोई ओहदे पे थे? पार्टी के ओहदे पे कोई थे? ओहदे थे तो एज अ मेंबर, एज अ कंपेनर मैंने काम किया, क्योंकि पार्टी इतनी छोटी सी थी। अच्छा, तो आपने कोई ओहदा नहीं रखा है? मैंने कोई ओहदा नहीं रखा। आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? अब अपने लोकल एरिया में हमने नहीं, अभी जो इलेक्शन हुए इनके, अभी मैं इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे या नहीं? इलेक्शन लड़ना चाह रहा था, मैं गया था सेंट्रल ऑफिस, और 1 दिसंबर 2023 को। तो क्या हुआ वहाँ? तो मुझे ना वोटिंग लिस्ट दी गई, ना फॉर्म दिया गया, कुछ भी नहीं। तो मैंने कहा कि क्योंकि असल बात ये थी कि टेक्सला और वहाँ से हमने यानी कि इसकी बुनियाद रखी थी, ज्यादा शुरुआत जो थी, तो हम ये चाह रहे थे कि ये आप टेक्सला से हो? टेक्सला से जी। तो ये हालिया दौर में ये जो है पिछले साल वाकयात हुए हैं जिसमें लोग PTI में आए थे, वो फिर भाग गए यहाँ से। तो मैं अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करना चाह रहा था, और मैंने कहा कि इलेक्शन लड़ता हूँ पार्टी के लिए। ठीक। और कौन रह गए? सब हो गए? मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु सर। आपका नाम क्या है? सर मोहम्मद मुजम्मिल सिंधु। सर मैं टोबा टेक सिंह से, चक नंबर 312 गाबे से मेरा ताल्लुक है सर। मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था अपना UC 81 से, टोबा टेक सिंह से। UC 81 टोबा टेक सिंह से मैं सीनियर वाइस प्रेसिडेंट था PTI का सर। कब? और 2018 कब थे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? सर ये 3 अक्टूबर 2020। फिर उसके बाद और मुस्तकिल रहे आप सीनियर वाइस प्रेसिडेंट? 2018 के जनरल इलेक्शन में मैं प्रिजाइडिंग ऑफिसर भी था मिडिल गर्ल्स कॉलेज में PTI की तरफ। कौन से इलेक्शन में? जनरल इलेक्शन में 2018 के।
आप किधर थे? टोबा टेक सिंह 312 गांव पे। जनरल इलेक्शन के आप क्या थे? प्रिजाइडिंग ऑफिसर था पीटीआई का। प्रिजाइडिंग ऑफिसर। वो बल्कि मैंने फॉर्म भी अप्लाई किया हुआ था इलेक्शन कमीशन में, मुझे उसकी तस्दीकी कॉपी दी जाए लेकिन प्रोवाइड नहीं की गई। अच्छा, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे। फिर क्या हुआ? आपने इलेक्शन भी लड़ाए? जनरल इलेक्शन? मैंने यूसी का इलेक्शन लड़ा था। हारे जीते? जी मैं 3 वोटों से दानली से हराया था। नहीं वो छोड़े, कौन सी यूसी? 81 से सर। ये कहाँ की है? ये टोबा टेक सिंह से सर। अच्छा, ये कौन सा इलेक्शन था, कौन सा साल था? ये 2015 सर। ये आप पीटीआई के टिकट पे बैठे? नहीं सर, उस टाइम मैं आजाद हैसियत से लड़ा था। आपने पीटीआई कब ज्वाइन की? सर 16 में ज्वाइन इन 2016। अब किस पार्टी में आप? सर पीटीआई में। छोड़ी नहीं है? नहीं सर। पक्की बात? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, कोई और रह गया? सारे खत्म हो गए? आप इलेक्शन लड़ना चाह रहे थे इंटर पार्टी? जी जी बिल्कुल सर, मैं 1 दिसंबर को पीटीआई सेंट्रल ऑफिस गया था और 4:30 बजे मैंने इनसे फॉर्म शॉर्म मांगे थे, नहीं मिले थे। 30 नवंबर को भी मैं गया था। इनका उधर के जो लड़के उधर नुमाइंदगी करते हैं पीटीआई सेंट्रल ऑफिस के, उन्होंने कहा जिनको खान साहब बनाएंगे वही बनेंगे, कोई फॉर्म शॉर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं। तो खान साहब आपसे नाराज हैं क्या? सर बस सच बोलने में नाराजगी हो जाती है ना जमातों में। आपने सच बोल दिया, ऐसा खतरनाक सच? बस सर कुछ इश्यूज चल रहे थे टोबा टेक सिंह में, तो वो उधर मैंने उनको हाईलाइट किया था, तो उस पर जरा मेरे से नाराजगी चल रही थी। चलें ठीक है, ओके। My lord, may I make short submissions on very short? Very short. I'll be as brief as I can. You were very short earlier also. I'll try to match that time or lesser. First of all, my lord, may I quickly take the court to the CMA 171 that I filed. A copy has been provided to. जी मिला ये 171. जी. As my lord will observe, my lords will observe, and lady, मैंने इसमें Constitution of PTI की कॉपी जो 1999 में अप्रूव हुई थी वो पहले लगाई है, और उसमें पहला सफ़ा जो नंबर 3 ऑफ द पेपर बुक है उसमें कमेटी जो कि कॉन्स्टिट्यूट कमेटी थी जिसने ये आइन साजी की थी, जिसके चेयरमैन हामिद खान साहब थे जी, वो इनके तमाम नाम हैं। इसमें नंबर 1, नंबर 4 आर नो लॉन्गर विद अस। With us, meaning they've passed away. Achha. Number 2 is in Canada and inactive. Number 5, I'm instructed also, is inactive. Number 7, 9, 7, 9, 10, and 11 have left. Party. Ji, only Mr. Hamid Khan, the chairman here. He left PTI. Have they joined other parties or they just? They have left the party. I have not been instructed कि current उनकी membership क्या, but they are believed to be no longer with the party. They have left the party. Chairman साहब, Saidullah Khan Niazi साहब, number 3. Who's he? He is also a founder member. Where is he? He is in Islamabad. I only see him occasionally on TV. He is a very vocal spokesperson, very active in the party. I believe he's still in the party. Ji, bilkul. ठीक. Dr. Alvi, President Dr. Alvi. The president, जी. Akbar S. Babar. जी, they are very much. Okay. जी. Also, I have attached a copy of the interim constitution from page 36 onwards to demonstrate the level of involvement. Page, what is the page? 36. Okay, fine. What? This is a letterhead written to why are you showing its relevance? To demonstrate that जो फॉर्मेशन है, मतलब नाम का फाउंडिंग मेंबर नहीं हूँ, एक्टिवली मिलके हामिद खान साहब के साथ और दीगर लोगों के साथ आइन साजी में एक्टिव रहा हूँ, और उसकी ये एक्नॉलेजमेंट लेटर है। जो मौजूदा आइन है इससे फर्क है जी, बहुत फर्क। इसके बाद काफी आइन बदलता रहा है, और अब ये इशू जनाब के सामने नहीं आया, इलेक्शन कमीशन के सामने आया था। देवर अपेरेंटली मोर देन वन वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक 2019 की जिसके ऊपर इलेक्शन होना था, एक वो अमेंडेड वर्जन जो कहा गया अंसारी साहब थे वापस ले ली, अमेंडमेंट हुई, और फिर तो देयर हैव बीन मल्टीपल वर्जन्स। बट शुरू में पैनल था या शुरू में पैनल नहीं था जी, पहले ये बात की है जी। आई डू नॉट हैव
have the track line of the constitution amendments from day one, but I believe the panel system has been introduced later. और कोई बात जी नंबर 3 पे सर एक बहुत अहम डॉक्यूमेंट है पेज 58 जी ये जिस सिंबल का जिक्र हो रहा है ये खत में इमरान खान साहब चेयरमैन ने मुझे अकबर एस बाबर को ऑथराइज किया था कि ये सिंबल की दरखास्त रीड आई कांट सी योर नेम रीड इट जी इसमें आप दिस लेटर इज रिटन टू द सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन एप्लीकेशन फॉर अलॉटमेंट ऑफ सिंबल इसमें ऑथराइजेशन है माय अपॉलॉजीज जी इमरान खान साहब का सिग्नेचर है और इसमें सिंबल के लिए जो मुख्तलिफ बैट टाइगर सारा है कि ये हम अप्लाई कर रहे हैं और इसके आगे मैं आपका नाम कहाँ जी मैं वो एनेक्स में है वो मैं दिखा रहा हूँ पेज 61 पर Mr. Akbar S. Babar, Central Information Secretary, Pakistan Tehreek-e-Insaf, is hereby authorized to submit the required documents of Pakistan Tehreek-e-Insaf to the Election Commission. So ये जो application भी थी मुझे ऑथराइज पार्टी कब बनी कौन से साल में पार्टी तो जी मिड 90s में बनी ये आइन जो है 99 में आया और ये सिंबल ये 2002 में क्यों आ रहा है पहले क्या सिंबल था I'll have to get instruction of that. ठीक है तो ये 61 हो गया और कोई बात जी और इस पे मैंने फिर एक सैंपल लगाया अनदर फाउंडिंग मेंबर को पेज 63 पे कि जब शो कॉज देना होता है तो किस तरह शो कॉज दिया जाता है पेज 63 पे चलिए खैर वो तो अलग बात है और उससे जो आखिरी किसको शो कॉज दिया है दिस शो कॉज वाज टू मिस्टर अहमद खान क्यों He said something that the secretary at that time did not like. He perhaps spoke truth to power as he always does. पहला पैराग्राफ क्या है? It has been noted by the undersigned that the chairman of the party, Mr. Imran Khan, that you have repeatedly in the print and electronic media spoken against the maligned, defamed the party without any justification and on the basis of fake and false allegations. Which amount to malafide. Whereas you are hereby charged. इसमें जो मैं जो कब की बात है? This is December 1, 2019. इसमें जो it was reported that Khan Sahab had responded very strongly to the show cause notice. और on page 65, I just want to read one line. This is 64 से पढ़ लेना. Will not quit party under any मैं वो उसी का जो मेन कोड था वो कर रहा था. So दुख की ये बात है कि a different measure, a different standard, a different argument is being presented for a co-founder. This is very painful to observe. इसमें आप क्या दिखाना चाह रहे हैं 65? ये जी कि let me make it loud and clear that I will not quit the party under any circumstances. So why is there a different measure of the application, the interpretation of the law of Akbar S. Babar? He has made it clear over the years he is not going to quit the party. If you want to turn him out, follow the law, give a show cause notice, let him defend it, turn him out. He is bound like I show cause notice का क्या बना? I have जो public knowledge है जी खान साहब में उसके अलावा 2 अजाफी कागजात जो मैंने जमा कराए हैं ये वो जजमेंट्स हैं एक फैसला इलेक्शन कमीशन का और एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जिसमें मेरा मेंबरशिप का क्वेश्चन एज अ फैक्ट एस्टैब्लिश हो गया कि मैं मेंबर हूं पार्टी इसको कंट्रोवर्ट नहीं कर सकी. इस पेज पे जी पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जजमेंट 68 से जनाब सिर्फ वो जुमला बता दें. जी मैं उस पर इसमें आप रिस्पोंडेंट थे जी ये वो मैटर है फॉरेन फंडिंग का जब मैंने कंप्लेंट उसमें दायर की थी और उससे जो लिटिगेशन एमिनेट हुई वहां पर भी ये कहा कि ये मेंबर नहीं है इसकी शिकायत मत वसूल करो. तो ये we went to the whole membership story multiple times and here where is it held that you're a member? जी in paragraph 10 in view of the above it is confirmed that paragraph 10 page बताइए. page 71
तो ये 10 से शुरू होता है जी, 11 में भी इसका डिस्कशन है, और 13 पे आ जाता हूँ, 73 पे, टू कट इट शॉर्ट, पैराग्राफ 13 ऑन पेज 73. In view of the above referred section 7, the petitioner has not produced any single document which would come under the definition of a show cause for suspension or expulsion of the membership of the political party, although there is no doubt that respondent number 2 was relieved from his duties of Central Information Secretary, and he himself acknowledged the same through his email dated 11/9/17. But for expulsion or cancellation of membership, it requires show cause notice, which was never been issued in case to respondent number 2. ये जजमेंट की तारीख क्या है? ये फैसले की तारीख है जनाब 18/7/2018, which is evident on page 68. इसकी उन्होंने अपील की? There was an ICA, and I believe that इस पॉइंट पे अपील नहीं. This question has never, this determination has never been overturned to date. There have been at least 11 rounds of litigation before the Islamabad High Court since. Why? For what? On every point at the ECP, कभी jurisdiction नहीं है, कभी मैं member नहीं हूँ, कभी उनका ये इख्तियार नहीं है, कभी उनका वो इख्तियार नहीं है, रिट होती रही है. If my lord wishes, मैं वो list of litigation भी file कर सकता हूँ, मेरे पास वो handy होगी. At the end of the day, उस litigation का बना क्या? उसका बना ये कि स्क्रूटनी अलाउ की गई, स्क्रूटनी हुई, फाइंडिंग ऑफ फैक्ट हुई कि सोर्सेज, प्रोहिबिटेड सोर्सेज से पैसे क्या बना? शो कॉज नोटिस पे फिर रुक गए जी. स्टे ऑर्डर चल रहा है. I have not been associated in the show cause proceedings. I have आपके क्लाइंट हैं, उनको पता होगा. नहीं, he has not been associated because now the argument. Client, where is he? हमें डायरेक्ट ना एड्रेस करें, आप पूछ लें उनसे. जी पूछ लें. मे बी मैं गुजारिश पूछ तो लेना. आपको तो शो कॉज की जरूरत नहीं, आपने हिस्सा नहीं लिया है. नहीं, उसमें जरा ये बता दीजिए कि जो फॉरेन फंडिंग का फैसला था अगस्त में, उसके बाद 5 अगस्त को शो कॉज दिया. उसके बाद PTI ने चैलेंज किया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, वो लार्जर बेंच पर 2 फरवरी 2023 में डिसमिस हो गया, एंड दैट इज वेयर इट स्टैंड्स. वो ये कह रहे हैं जी कि शो कॉज के बाद दे चैलेंज इट बिफोर द इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिसमें एक लार्जर बेंच बना, बट वो भी उनकी दरखास्त डिसमिस हुई वहां पर. तो अब इनके इल्म के मुताबिक कोई अमर माने नहीं है. बट आई हम्बली सबमिट. शुरू कब हुई ये कंप्लेंट आपकी? नवंबर 2014. First hearing, I believe, took place in January. It was filed in November. The first hearing took place in January 2015, and then successively chalti rahi. And then the round of litigation began later in that year, and it has been going on and on, sir, since then. जी सर, ये पहला पॉइंट है ऑफ द डॉक्यूमेंट्स. और कोई बात? जी सर, ग्राउंड्स बताए गए कि अभी कहा कि जी बड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली जवाब दे दिया है कि क्यों अकबर बाबर को पार्टिसिपेट नहीं करने दिया. कम से कम 4 रीजन बताए गए. इतना कॉम्प्रिहेंसिव है कि नॉट अ मेंबर एक दफा कहा गया, फिर कहा गया डिड नॉट पे 50,000 रुपीज, फिर कहा गया ही केम लेट, फिर कहा गया ही डिड नॉट कम विद अ पैनल. नहीं, देखिए वो जरा कॉन्ट्रडिक्टरी पोजीशंस ले रहे हैं ना जी. एक तरह तो उन्होंने लिख के तो कहा है कि आप मेंबर नहीं है जी. तो जब मेंबर नहीं है तो फिर उनको भगाएं, मतलब वो फिर नॉमिनेशन पेपर का सवाल ही नहीं पैदा होता है. बिल्कुल. वो फिर ये मतलब बड़े रिलक्टेंटली हामिद खान साहब तो कंसीडर्ड वेरी फ्रैंकली दैट ही इज द फाउंडिंग मेंबर. यस. उन्होंने कहा जी मुझे नहीं पता इसके बाद क्या हुआ. यस. अब पेज 220 अगर देखिए रेट में कहते हैं ना कम टू कोर्ट विद क्लीन हैंड्स. उन्होंने कहा कि जी आप लोग मेंबर्स नहीं है. ये गलत है. अब बेशक अपोज करें आपकी पिटीशन, वो तो हक है सबका, मगर फैक्चुअली तो बताएं ना सही बात. बिल्कुल. फिर आप यस बिल्कुल आप कहें कि जी मेंबर हैं मगर इनको कोई इख्तियार नहीं है, जो भी बात करें, तो ये जरा सा हमें ये जरा फर्क बताइए ना. जी बिल्कुल. तो इन्होंने कोई पेश किए सबूत? नहीं सर, नॉट टू माय नॉलेज. तो आपसे इनसे गिला है तो बाकी जो आए 5-6 लोग, इनसे क्या मसला है? जिस तरह उन्होंने कहा सर, माय रिकलेक्शन इज, उन्होंने ये बयान शायद नहीं किया है. जब इलेक्शन कमीशन में बहस हो रही थी तो उन्होंने अपने मेंबरशिप के कोई फॉर्म्स या इन्होंने कुछ चीजें उधर शो की थी. सो इफ माय लॉर्ड विल आस्क देम, दे विल बी एबल टू शो देम, शो द कोर्ट कि क्या एविडेंस थी ऑफ देयर मेंबरशिप. अच्छा, और कोई बात? जी. पेज 231 पर जो मेरी कंप्लेंट है इलेक्शन कमीशन को, उसमें वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि दिसंबर 1 को 4:45 पर मैं गया. This is well within the time of the nomination papers. So I do not know where they age. Page 231.
Paragraph 3, on December 1, 2023, around 4:45 p.m. in the afternoon, I, along with a delegation of PTI members, visited PTI Central Secretariat located in G8 sector of Islamabad. Now, इलेक्शन कमीशन रिकॉर्ड तलब किया है जनाब ने, उसमें वीडियो एविडेंस है, उसमें वाजे है कि वो विद इन टाइम देयर वाज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल देयर। तो शायद खुद कह रहे हैं, मान भी रहे हैं कि आप गए थे, बट अभी आई मिसहर्ड कि उन्होंने कहा कि जी वक्त के बाद आए हैं। मुझे तो वक्त के अंदर आए हैं, यहाँ लिखा हुआ है, इसको चैलेंज पहले नहीं किया, आज बिलेटेड चैलेंज है। वो इतनी बारीक चीजों में हम नहीं जाएंगे। जी बेहतर। अगली गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ सर कि जो क्वेश्चन ऑफ लॉ है वो आगे करा। तो ये कह रहे हैं कि चले भाई वो इलेक्शन गलत हो गया, मगर मुझसे सिंबल तो ना लें। मैं उस पे क्या आप कहते हैं? जी 215 को अगर इजाजत दें तो मैं सजेस्ट करूंगा कि उसकी करेक्ट रीडिंग प्रेजेंट नहीं की गई। करेक्ट रीडिंग कुछ यूं बनती है, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन एनी अदर लॉ, ए पॉलिटिकल पार्टी enlisted under the act shall be eligible to obtain an election symbol. एलिजिबिलिटी सर मैं रुकता हूं, यहाँ पर एलिजिबिलिटी मेजर है, यहाँ पे ऑटोमेटिक ग्रांट ऑफ सिंबल नहीं है। आप अपने जी कौन से पेज में? सर मैं सेक्शन 215 ऑफ द इलेक्शंस एक्ट पढ़ रहा हूँ। 215 अच्छा, जो ये कह रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी टू ऑब्टेन अ सिंबल का स्टैंडर्ड है। आर्ग्यू ये किया जा रहा है कि ग्रांट हो गया। आपका पॉइंट क्या है? कि अगर ये दस्तावेजात जो कि कानून कहता है कि आपने सर्टिफिकेट्स देने हैं, तो फिर आप एलिजिबल हो जाएंगे टू ऑब्टेन ए सिंबल, बट यू डू नॉट ऑटोमेटिकली गेट अ सिंबल ग्रांटेड टू यू। और यहां पर जो पॉइंट मैं गुजारिश कर रहा हूं कि व्हेन द मेजर ऑफ एलिजिबिलिटी इज ब्रॉट इनटू ए क्राइटेरिया, देन समवन हैज टू डिटरमिन whether or not you are eligible. If I am 5 years old and wants to run a 100-meter Olympics race, somebody will determine whether I am eligible to do that. So, और इसी में सर एक और गुजारिश है कि रूल 15 का हवाला दिया गया, जो इलेक्शन रूल्स के इन्होंने अपना PTI के अपने इलेक्शन रूल्स हैं, उसमें भी वो छोड़ें, दूसरा पॉइंट बताएं। उसमें बड़ा लिखा आफ्टर का लफ्ज है, उसमें वो जनाब नोट कर लें, आफ्टर he announces। ये एक्चुअली क्योंकि इस पे बहुत इन्होंने लेबर किया पॉइंट, आई विल नॉट टेक मोर देन 30 seconds। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel or chairman, as the case may be, at the notified polling day at the polling venue after taking objections. They have not showed what objections, if any. They even asked anybody कि कोई objection तो नहीं है election में, or from the members, or votes present at the venue. ये किधर से आप पढ़ रहे हैं? ये मैं page 100 of the PTI rules. Where will we find them? On our books. जी page 100 of the petition. Page 100. जी ये शुरू होते हैं पेज 98 पे टाइटल एंड 115 रूल 15 जो जनाब के सामने पढ़ा गया। The Federal Election Commission shall declare the result of concerned panel नंबर क्या पढ़ रहे हैं? 15 as the case may be at the notified polling day at the polling venue after taking objections from the member or voters present at the venue. So they have not discharged the burden of after. नहीं, ये तो फिर उनका जवाब बनता है। वो हमने जब उनसे पूछा कि जब अगर सारे अनअपोज्ड आ गए तो फिर आप जाके मीटिंग क्यों की वहाँ चमकनी में, तो वो तो इस पे रिलाई कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट करता। मैं ये कह रहा हूँ कि ये रिलाई जरूर कर रहे हैं, लेकिन ये उनके हक में बात नहीं कर रहा है। ये बेसिकली अनअपोज्ड का जो फॉर्मूला या मॉडल या मेथोडोलॉजी यहाँ प्रेजेंट की गई है, ये इन रूल्स की भी मंशा मुझे तो नजर नहीं आती, बट दैट इज फॉर माय लॉर्ड्स टू कंसिडर के क्या है। अगला जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ सर, इट्स अ हाउस कीपिंग एस्पेक्ट। आइन की, PTI के आइन की एक शिक है जो कि पेज 171 पे जनाब के सामने आएगी।
अब बारीकियों में आपको भी आप ले जा रहे हैं, हम अवॉइड कर रहे हैं चीजें जी। 171 पे क्या है ये मैं इसलिए गुजारिश कर रहा हूँ कि जनाब ने सवाल पूछे कि पेशावर में पिटीशन क्यों हुई, किसने की, लाहौर में क्यों हुई, किसने की, उसका आप क्या जवाब देते हैं? मैं देता हूँ। मैं पहले कहना है कि मैं जा सकता हूँ कहीं भी। I will defer and support the argument presented by मखदूम साहब कि जब उन्होंने एक एल फोरम इलेक्ट कर लिया था लाहौर का तो वहीं पर रहना चाहिए था। ये फोरम शॉपिंग ही है मेरी नाकिस राय में, और दिस प्रैक्टिस शुड नॉट बी कंडोन्ड। ये जो पिटीशन इन्हें फाइल की पेशावर में, इन्हें डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी पेंडिंग है? नहीं सर, मुझे नहीं नजर आया, बट मैं डबल चेक कर लेता हूँ। बट मैं उससे भी एक प्रायर फंडामेंटल पॉइंट, हाउस कीपिंग अगर इसको लाइटली लेना चाहते हैं और मोर सीरियस अगर इसको अथॉरिटी की बेस देखना चाहते हैं, वो ये है कि ये कौन है आपके साथ जो खड़े? माय कॉलीग बदर, ही इज बीन वेरी काइंड एंड हेल्पफुल एंड आल्सो नॉट नाइदर काइंड और हेल्पफुल because he would be checking when we asked a question कि इन्होंने इलेक्शन पिटीशन जो पेशावर हाई कोर्ट में फाइल की उसमें ये उन्होंने डिस्क्लोज किया कि लाहौर में भी मैंने पिटीशन फाइल की। वो एक्चुअली टेल्स वो पर उसको डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, उनको दे दें, चेक तो कर लें। जी, बदर जस्ट मेंशन कि मैंने चेक किया, सर्टिफिकेट में उन्होंने ऐसा नहीं लिखा, उनका फर्स्ट पिटीशन है। बट नहीं, वो पिटीशन पेशावर में फर्स्ट है। उन्होंने जिक्र किया कि भाई लाहौर में भी एक पिटीशन है, बेशक उसकी वजह बता दें कि जी दूसरा मसला है, इधर दूसरा मसला है। नहीं जी, ऐसा नहीं। जो मैं Sorry, वो जरा on a lighter note था। I hope you don't mind. Not at all. I hope he doesn't mind. No, I would not be able to read all these documents without them. Just point out, नहीं कह रहे हैं, but actually पैरा 20 में जिक्र किया। सर्टिफिकेट में नहीं है, 20 सर्टिफिकेट में, पैराग्राफ 20 में। 20 में बात। एक सेकंड, नहीं पेज बता दें पिटीशन का पहले। पेज 38 कैंसिलेशन मेंबरशिप बता दें। पैराग्राफ 20 में पढ़ें। That however no written order was provided for longer than expected, therefore the petitioners filed several applications for copy of the order, saying that an order had already been announced and written order may be passed. The applications were filed on so-and-so, but no avail. Finally, an order was announced by ECP on 23/11/23, completely changing its earlier order announced on so-and-so, whereby ECP declared that petitioner had failed to hold intra-party elections in accordance with prevailing Constitution 2019, and directed the petitioner to hold intra-party elections in accordance with the Constitution prior to the amendment of June 2022 within 20 days positively, and also resubmit its result along with all required documents including form so-and-so within 7 days. This order of ECP dated 23/11/23 has been challenged in writ petition which is pending in the Lahore High Court. Lahore. But इसमें आपने नंबर नहीं दिया और इसमें आप इसको डिस्टिंग्विश नहीं कर रहे हैं कि ये रेलिवेंट नहीं है। मेरे ख्याल अगर या क्या वो बता दें, वो वाला पोर्शन बताएं कि ये अलग कंट्रोवर्सी है। वो I mentioned it, that was the question. I mentioned किया। पेज 50 पे देखेंगे जनाब सर्टिफिकेट। Lordship, I've just received page 50. Page 50 पे जो सर्टिफिकेट है, certified as per instructions of the client that this is the first petition before this court against the impugned order. This court, वो तो बात सही है उनकी। Earlier writ petition so and so was disposed of with the direction to ECP to decide the matter of IP. ये कौन सी petition है 5791? जिसमें डायरेक्शन दी थी कि जी आप नहीं पता, आप तो ऐसे कह रहे हैं पता है, किसी ने इसकी निशानदेही नहीं की अभी तक। मैं अभी बता देता हूँ एट पेज 602 पे जनाब फैसला है इसका, इसकी पिटीशन लिखी थी वॉल्यूम 3 वॉल्यूम 3 602 पे फैसला है जी। And the petition starts at page 585. The order in the petition and the petition starts at page 585. ये जरा पढ़ें, ये किसी ने आज तक जिक्र नहीं किया, तो ये क्या चीज़ है? 602 पेज पढ़ता हूँ जी। Petitioners through the instant petition have asked for the issuance of an appropriate writ seeking directions to the respondent to display published certificate of the PTI on website of the Election Commission of Pakistan in terms of section 2093 of the Elections Act.
2070 without any delay. During the course of arguments, we have been informed that subject matter of instant petition dispute over the intra-party elections of the Pakistan Tehreek-e-Insaf conducted on 2/12/23 has already been heard in detail by the Election Commission of Pakistan, and judgment has been reserved due to restraining orders of this court dated 11/12/23 and 15/12/23 passed in the instant petition. Being so, notwithstanding the arguments so advanced and hard-pressed by the learned counsel for the parties at the bar, keeping in view the peculiar facts and circumstances of the case and in the larger interest of justice, rather than passing in any order or observation qua publication of the certificate of the PTI on the website and its publication in the official gazette under the provisions of... ये स्टेक ऑर्डर दिखाई 11, 12 और 15, 12 ये क्या है? जी मैं लगाया इसमें मैं देखता हूँ सर इसमें। और ये पिटीशन भी बता दें किस पेज पे है? The petition was 585 सर। नहीं इसका ये जो 11 इसमें Are you sure? अच्छा अब ये स्टे बता दें, ये स्टे कैसा है? ये मैं वो देख रहा हूँ, मुझे सर वो 11 और 15 का ऑर्डर महफूज साहब है कहीं या नहीं है? Please see page 602. The last line on the page refers to orders, interim orders passed on 11th and 15th of December 2023. Are they on the record? My lord, they are not. Do you have them? My lord, I'll just check. Okay. ये इस पिटीशन में ने क्या मांगा था? प्रेयर क्या थी इसमें? जी मैं इसका प्रेयर है जनाब। On page 5 starts with 590. Hold and declare that delay on part of the ECP to publish the certificate of PTI on the website of ECP, especially in view of upcoming general elections. आगे it's missing language sir. B, direct the Election Commission of Pakistan to forthwith publish the certificate of PTI on website of ECP as required by section 2093 in the interest of justice. Hold and declare that proceedings by ECP in this regard are without jurisdiction, without lawful authority and illegal, and no action can be taken by ECP in pursuance thereof. Hold and declare that ECP cannot question the validity of the IPEs, which is intra-party elections, on the basis of any objections filed by any person. In the meanwhile, restrain the ECP. Can you go back to page 602? In paragraph 2, this is the dispute. G. Any other point? Actually, the point that I wanted to make with reference to the Constitution was, my lord, that if Your Honour, when you use the word Constitution, just clarify. PTI or Pakistan? PTI Constitution. My apologies. Page 171. यहाँ पर जनाब देखेंगे कि जो शिक है 1.3.7, this is second from the bottom. SG, which is the Secretary General, shall represent party in all judicial and legal matters. So while the questions were being asked by the court, I observed that the Peshawar petition was not authorized by the Secretary General, but the Chairman. So this was just a point I wanted to bring to the court's notice. Umar Ayub Khan is a petitioner. In Lahore, in Peshawar. He's a petitioner, but he's one of the petitioners here. But the authority that is appended, अगर उसको मैं उसका सफा भी बता देता हूँ, वो that has been not given by the Secretary General himself, but by the Chairman. But like I said, sorry. नहीं, apologies. I think there's a लास्ट 2 पॉइंट्स सर. प्राइवेट क्लब नहीं है, अभी हमने सुना है कि पॉलिटिकल भी है, इट्स अ मोर. और आखिरी सेक्शन 66 का हवाला देना चाहता हूं, बिकॉज 104 सेक्शन ऑफ द इलेक्शंस एक्ट का जिक्र किया गया. सेक्शन 66 इज क्वाइट इंस्ट्रक्टिव टू दैट डिबेट. आई जस्ट वांट टू आइडेंटिफाई दैट. 66 says
A contesting candidate before seeking allotment of a prescribed symbol shall file a declaration before the returning officer about his affiliation with a particular political party, if any, along with a certificate from the political party showing that he is the party's candidate from the constituency. So ये जो तासुर दिया गया कि सिंबल, ये जो आपने लिस्ट देनी है या affiliation एसोसिएट करनी है, सिंबल मिलने से पहले करनी है, तो कोई अमर माने नहीं है किसी भी कैंडिडेट को अपने कागज जमा करा के इलेक्शन लड़ने के लिए. ये जो 1666 is it attending to general elections or intra party elections? So I'm now coming to the general elections. नहीं, ये 66 जो पढ़ रहे हैं जी general elections. I've not understood the point. Sorry, it was argued that the election commission perhaps wants to deprive the party from the symbol and in the process disenfranchise lakhs of people and also its members. So यहाँ पर वाज़े है कि कानून की मंशा ये है कि अगर कोई इलेक्शन लड़ना चाहता है तो वो जब अपने कागज जमा कराएगा तो उसने एक अपना एफिलिएशन लेटर और अपनी कागज प्रायर टू अलॉटमेंट ऑफ सिंबल करना है. तो जो एप्रीहेंशन है कि जी सिंबल नहीं मिला हम इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगे, ऐसा कोई नहीं है. पार्टी के बेस के ऊपर पार्टी ये कह सकती है जी कि मैं इस पार्टी का नुमाइंदगी से ये इलेक्शन लड़ रहा हूँ. सिंबल की डिबेट बाद में शुरू होती है. ठीक, जिस तरह मैंने कल गुजारिश की थी 3 कॉन्सिक्वेंसेस थे, मैं वो दोबारा रिपीट नहीं करता. जी. That is it, my lord. I have nothing further to add unless there is a question that I need to respond to. What is war of attrition? You should ask a question. I've asked a question. On the I cannot answer that. लेकिन एक और सवाल में जब Badr was trying to mention, जब ये कहा गया कि जिस तरह इलेक्शन पिटिशंस के हवाले से बड़ी वाज़े प्रोविजंस है कानून में कि कौन चीज़ कब होनी है, क्या प्रोसीजर है, सेक्शन 3(1) और सेक्शन 4(3) का जिक्र नहीं किया गया 3(1) ऑफ द इलेक्शंस एक्ट, जो ये कहता है कि जहां पर, ये मैं पढ़ देता हूं सर, ये नए पॉइंट्स हैं तो हम जरा पढ़ तो लेना जी. ये मैं ये सिर्फ वजाहत में करना चाहता हूं क्योंकि ये पॉइंट रेज हुआ. सेक्शन 31 नो सर, सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 of the Elections Act 2017. In the performance of its functions and duties and exercise of its powers, the Commission shall regulate its own procedure. So अगर कोई ऐसी बात थी जो कह रहे हैं तो मेरी कंप्लेंट गई इंट्रा पार्टी के हवाले से. खैर ये तो ओके. और इसी तरह सेक्शन 4 में जनाब सब सेक्शन 3 जो है, इट फॉलोज द कंप्लीट जस्टिस पावर वेस्टिंग इन द कमीशन अंडर सब सेक्शन 1 एंड इट सेज, मैं 1 भी पढ़ देता हूं, द कमीशन शैल हैव द पावर टू इशू सच डायरेक्शंस और ऑर्डर्स एज मे बी नेसेसरी फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ इट्स फंक्शंस एंड ड्यूटीज इंक्लूडिंग एन ऑर्डर फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी मैटर बिफोर इट. बाकी अटेंडेंस. और इसी तरह से सब सेक्शन 3, एनीथिंग रिक्वायर्ड टू बी डन फॉर कैरिंग आउट द पर्पसेस ऑफ दिस एक्ट for which no provision or no sufficient provision exists shall be done by such authority and in such manner as the commission may direct. So वो जो challenge to the complaints and all है, उसके context में मैंने ये निशानदेही की है कि ये provisions भी exist करती हैं. The commission is not wholly deprived of power and authority. It is an independent body as the court has observed and it needs to be empowered. Thank you, coach. Thank you. किधर हैं जी सर? आई एम इन्फॉर्म्ड कि पहले चिराग होता था बैट से. पहले चिराग होता था सिंबल बैट से पहले. किसका? 2002 में PTI का सिंबल की जो बात हो रही है. ओके. जिन्हें आपने एक सवाल पूछा था क्योंकि और सिंबल तो नहीं था तो उसका मुझे उन्होंने बताया कि चिराग था. तो he's earned his keep. Always. More than grateful. Thank you. Anything, my lord? Do you just want to right of reply is restricted to the points other side is raised, including the reasons assigned by the bishop. My lord, that would be my main burden because that has been the main plank of the argument of the other side. My lord, very, very briefly, may I just hand over a few notes of chronology first?
My Lord, this is a chronology which has just been given. This is just to save your Lordship's time. खान साहब को भी दीजिए. जी. I will not read it. This just gives, my Lord, the event and the timeline and the page number to facilitate your Lordships. अच्छा, एक इनका ये पॉइंट है कि आप डिफरेंट स्टैंडर्ड्स अप्लाई कर रहे हैं. किसी को आप फाइन लगा रहे हैं, किसी को कह रहे हैं बाद में इलेक्शन कर दो, और सिर्फ इन्हीं को टारगेट कर रहे हैं. ये पॉइंट पहले आप एड्रेस कर लें. My Lord, with your Lordship's leave, as of yesterday, the enlistment of about 13 political parties. 13 or 30? 13. जी. They have been. आज कितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं पाकिस्तान में? वो मैं आपको चेक करके बताता हूँ, बट 13 सबूत है 13 की. 13 का सर, देयर इज एन ऑर्डर. 13 का नहीं, एक तो हमने खुद देखा था, ऑल मुस्लिम लीग वाला जो था, ऑल Pakistan Muslim League. Just place a copy of the order before your Lordship. Where they are all being done by one order or 13 orders? By one order. ये order हमें दिखा दें. जी सर. So 13 plus 1, all Pakistan Muslim League was separate to this, so it is included in the 13. My Lord, this is not a case of all Pakistan Muslim League. वो तो हमें पता है क्योंकि वो हमने खुद ही लिखा है परसों. इसी के पर कल लिखा. Sorry, this is 12 plus 1 is that. These are the 12 parties. Your Lordship will see they're all listed on page 1. Page 1? The very first page. This is the order dated. नाम तो किसी का नजर नहीं आ रहा है मुझे. पहले नाम. If your Lordship will see, after the name of the parties, your Lordship will the names of the parties. On Commission's notice, Dr. Paul Jacob Bhatti, President Chairperson, All Pakistan. कुछ और आपने हमें दे दिया. इस पे कहाँ लिखा है ये बातें? ये क्या दिया है? ये किस ये ऑर्डर की बात कर रहे हैं? जी सर, the order dated 4th of January 2024. इधर कितने पार्टीज के नाम? Sir, if your Lordship see the heading on Commission's notice, and then your Lordship will see serial number 1 to 12. अच्छा नहीं ये अच्छा अभी ये कुछ और दिया था. अच्छा ओके, ये वाला है. अच्छा ओके, गॉट इट. ऑल पाकिस्तान तहरीक, अवामी पार्टी, भावलपुर नेशनल पार्टी, सबका पाकिस्तान पार्टी, इनको आपने उड़ा दिया है. The discussion is in paragraph 24. नहीं ठीक है, वो हम ऑर्डर वो हम नहीं देखना चाहते क्योंकि कल को हो सकता है हमारे सामने चैलेंज हो जाए. जी सर. हम सिर्फ ये देखना चाह रहे थे कि आपने वो क्या उसको कहते हैं डिस्क्रिमिनेटरी ट्रीटमेंट तो नहीं किया है. जी, एनपी को प्रॉब्लम की जो डिटेल जजमेंट हमें प्रोवाइड की गई बिकॉज ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन केपी. The time was extended up to 10th of May of this year. उन्होंने रेफरेंस के लिए दे दिए हमें अभी जजमेंट. अवामी नेशनल पार्टी को आपने टाइम दे दिया कि इलेक्शन बाद में करा लो. Sir, that order I have also just taken a look at. It was handed over, a copy was handed over to me. In that particular case, the outer limit of the statute to hold elections is 5 years. Those 5 years had not expired in their case, and they wanted an extension. अच्छा, उनका 5 साल नहीं हुए थे? 5 साल जो सर स्टैट्यूट में आउटर लिमिट है वो 5 साल नहीं हुए थे. उस 5 साल के अंदर की उनको एक्सटेंशन दी गई. कॉपी दे दूंगा. अच्छा ओके ठीक है, गॉट इट. माय लॉर्ड. Okay, what else do you want to say? My Lord, a preliminary objection was raised by one of the learned counsel. Maintainability. Our respectful submission is that if this objection, first your Lordship may see, file Election Commission, please order it. If that in a number of cases the Election Commission has come before this honorable court, and we have prepared the list to show recently the number of cases which I have to move everything. The Election Commission has come before this honorable court, and this honorable court has dealt with their matters. Your Lordship saw that this has been happening way back since the case of Javed Hashmi.
And your Lordship will see these are all petitions of 2023 and 2022 which have been disposed of by your Lordships. Election Commission's petitions have been entertained under Article 185. Two quick points on that. These are not reported judgments. No, my lords, insofar as we are aware, they are not. और आपने एक reported judgment भी तो दिया था। जी सर, दो दिए थे। कल दिए थे ना आपने? जी सर। वो तो लगे हुए हैं आपकी बुक में। जी सर। हाँ। वो भी लगे हुए हैं। अभी एक अहम खबर आपको दें, खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस के 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन। सिक्योरिटी फोर्सेस ने 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया है। पहला ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली, जबकि दूसरा ऑपरेशन डेरा इस्माइल खान के इलाके कोलाची में किया गया। फायरिंग के तबादले में इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर तबस्सुम और कदरमान भी हलाक हो गया है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात हासिल करेंगे डिप्टी ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद एजाज अहमद हमारे साथ मौजूद हैं। एजाज अहमद, बताइएगा क्या तफसीलात आ रही हैं इसमें? DISPR की जानिब से बताया गया है कि खैबर पख्तूनख्वा में 2 मुख्तलिफ ऑपरेशन के दौरान, और ये दोनों ऑपरेशन इंटेलिजेंस बुनियादों पर किए गए, 4 खतरनाक दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। पहला ऑपरेशन शिमाली वज़ीरिस्तान की तहसील मीर अली में हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेज और दहशतगर्दों के में शदीद फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 2 दहशतगर्द जिनमें दोनों हाई वैल्यू टारगेट थे, उनमें खास तौर पर एक हाई वैल्यू टारगेट कदरमान तबस्सुम उस कदरमान मारा गया, जबकि उसका साथी साजिद नौकंडी भी इस ऑपरेशन के दौरान जहन्नुम हासिल हुआ। दूसरा ऑपरेशन पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेज का मुश्तरका ऑपरेशन था, जो कोलाची डेरा इस्माइल खान में हुआ। इस ऑपरेशन के दौरान भी 2 खतरनाक दहशतगर्द मारे गए। ISPR का ये कहना है कि इन दोनों इलाकों में सैनिटाइजेशन ऑपरेशन भी किए गए, ताकि अगर कोई मुमकिन दहशतगर्द मौजूद हो तो उनको खत्म किया जा सके। मरने वाले दहशतगर्दों के कब्जे से हथियार और गोला बारूद भी बरामद हुए, जबकि ये दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज पर हमलों, अगवा बराए तावान, टारगेट किलिंग्स और दहशतगर्दी की दीगर सरगर्मियों में मुलव्वस थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम तर तफसीलात के लिए एजाज अहमद। थैंक यू उन दोस्तों के लिए जो दोस्तों में हमेशा कुछ खास देखते हैं। दोस्ती की इसी मिठास के लिए बना है कैंडी। कैंडी में वो खास मिठास है जो किसी और में कहाँ।